military dictatorship of General Zia. And for somebody growing up in, going through junior high, high school in the States, growing up with freedom, justice, peace, prosperity, and into a, a kingdom of darkness, really, because it was an extreme right-wing, Wahhabi-esque military dictatorship. So as a 20-year-old, I didn't know, how do you cope with that? Because there was only one television channel, PTV, and one radio station. So another friend of mine who was studying in engineering university, you must know his name, Junaid Jamshed. So the reason I'm telling you this story is how to cope with a situation which is beyond your control. Where Moeed spoke about the garrison state. That was the state of mind of all of Pakistan during General Zia's dictatorship. So what weapons did we have? Well, we had poetry and music. And it wasn't as if, my family belonged to the Patiala Gharana or Junaid's family belonged to some classical family. We were just amateurs. But I'm going to share this with you, that out of just a desire, what can we add, what we can uplift the country, the youth, we came up with ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान. So a big round of applause for all of you right now. The reason I tell you that is, Allama Iqbal, the poet of the East, said, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है. That whisper in your heart has strength. It may not have wings, but it has the power to fly. Now, you see why it's important to come from the heart. Because the heart resonates. Whether you're a child, you're a teenager, you're 70 years old, you're 80 years old, the heart vibrates. Now, I want to fast forward. We never knew that this simple offering called Dil Dil Pakistan will be being sung in 2023 in Birmingham, Alabama, by so many of you people out there. So that is the power of poetry and music. It opens up and it gives you a way to think non-linearly. Like in the garrison state, when Moeed was saying that there's linear thinking, that you can't think outside of the box. Music and poetry gives you the freedom and it inspires you. Now, I want to come back that like the military dictatorship of General Zia, we have a reign of terror, more akin like Stalin and Hitler's reign of terror. And I'll tell you a couple of stories, but they're dark stories, they end with hope. I was on a plane with former Prime Minister Imran Khan on the 8th of October. We were flying back from Dera Ismail Khan. And the reason we'd gone there was the flood victims, because there were a lot of floods. Khan Sahib had gone to give away checks to the victims of the floods. Flying back, we realized that the helicopter is basically hovering in just one space. It's not moving anywhere. So Khan Sahib asked me, he said, can you ask the pilot to tell us what's happening? So ladies and gentlemen, both the engines were failing. Both the engines were failing because someone had mixed sediment into the fuel in Dera Ismail Khan. So this was the first assassination attempt on Khan Sahib. Now, I looked at him, he didn't show a second's worry. He said, okay, it'll be fine, it'll be fine. And the miracle was that in that hilly area, there was a cricket ground. And the pilot found a cricket ground to land. And so we were saved there.
Fast forward. Allah. Bilkul ji, bilkul, bilkul. And then if you fast forward, 25th of May, I was in New York, my sister and my brother-in-law, US citizens in Karachi. 15 armed men came to their house. 9 of them jumped over the wall, broke the doors, broke the glass, broke the furniture, dragged, it's 2 a.m., they dragged my brother-in-law and sister out and asked them, where is Salman? I was in New York. So they said, nahi, jhoot bol rahe ho tum log. My brother-in-law has nothing to do with politics, nothing to do with demonstrations, he's a businessman. And he said, hum aapse jhoot nahi bol rahe. 9 of them were pointing guns at my sister and my brother-in-law. And they told my sister, okay, we're going to leave you. And if he doesn't tell us the truth, we're going to come and sexually abuse you. I'm just using a... So, for 5 days, they tortured my brother-in-law. And my sister, because she suffers from a chronic inflammatory disease called lupus, she didn't know what to do. So मैं कह रहा हूँ आपको कि as a US citizen, all of you or most of you are US citizens. Please raise your hands if you are. Thank God. Yeah, so what I did was that I got in touch with all the people that I knew in the Senate, in the State Department, in the Biden's administration, in Congress, the media, and I went to each of the doors and I knocked on those doors and I said, US citizens of Pakistani origin are being tortured in Pakistan. Miraculously, miraculously, 5 days later, the pressure that was put on, and that's the power of when we act, we have to act. The pressure that was put on the people who were holding my brother-in-law, they got this message that release him immediately. So on May 31st, he was released, but they said that if you stay in Pakistan, we'll destroy your businesses. We know all of your relatives because of the NICO. So my family had to leave. All my relatives had to leave Pakistan and come to the United States. At the moment, now as I speak today, Imran Khan is in a death cell. Today is the 21st day that he has been denied. He's a former prime minister. He has been denied a doctor's checkup. He's been denied his family's visits. He's even been denied his lawyers. One of his lawyers, Sheikh Afzal Marwat's brother-in-law, was shot dead. And yesterday, Sardar Latif Khosa was in a lift for 1 hour. What are they doing? These are what is the torture, mental torture, physical torture, to just scare people from speaking. But are we scared? Are we scared? No. None of us are scared. All of this panel here, you'll hear Moeed Saab and Shahbaz Gill and Heather Mehdi. Our lives are threatened, our families are threatened, but we're never going to shut up. I was blackmailed to say that I renounced my support for Imran Khan. And I told them, मैं मर जाऊंगा, मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा. I would urge each one of you कि इस वक्त हमें ना हक के लिए खड़ा होना है. बिल्कुल नहीं छोड़ना आपको. इंशाल्लाह ताला. और देखें, जिस तरह जनरल ज़िया की मैं इसको ख़त्म करने लगा हूँ, जो मैंने आपको किस्सा सुनाया. दिल पाकिस्तान जिस साल में रिलीज हुआ और आप लोगों ने मकबूल किया, उसी साल जनरल ज़ियाउल हक का जहाज भी गिरा, फट गया जहाज, और फिर जमहूरियत वापस आई. तो इंशाल्लाह ताला ये भी जो डार्क एरा है ना, ये इसी तरह करके ये फटेगा और जमहूरियत वापस आएगी. We're also joined by Francis Aziz, to my right, and so far he hasn't spoken. Francis, I would like to understand from you, is the situation of the Pakistani Christian community is getting bad from worse after all what we saw in Janawala, Faisalabad in the last few days?
Thank you very much for this program and मुझे invite करने का और जो जड़ावाला में हुआ ये अक्सर minority के साथ all over the world. For Professor Sahab, and you can speak in English. This will be interesting to know about. Okay. Mic is on, but you have to keep it close to your mouth. This is the pre-pandemic era. There is always persecution for the minority in all over the world. But living in Pakistan, raised in Pakistan, right now I see the first time happen, there were 9 churches were burned. And it's the cause of all this is because we forgot why and when Qaid-e-Azam created this Pakistan, what was his thoughts? He tried his best to create a Pakistan to show Hindustan that what Islam think about the minorities. And when I reflect, I think it was in his mind, Masake Medina. And second, when I see the flag, it reminds us every day that there is a flag even tell us that there are 2, white is minority. So it means every time, every day, when we salute our flag, it reminds us how we have to take care of our minorities. But unfortunately, I am very sad, not me, but all of us, brothers and sisters, my community, my Pakistanis, we all are very sad with a heavy heart that what is happening now, it's not only to the Christians, but it happened to Aslan, a 13 years old boy was abducted. His sisters were harassed. His mother was harassed. His father, I feel, is killed by our guards, our police, who have a duty to protect us, but they really abused and killed innocent a father. Here is my feelings that the lack of education we are not teaching our kids is that there is no any school which remind us what is Masake Medina, what is Riyasat-e Medina. I'm very proud to talk about a great man, Imran Khan, that he talked about it. He revised that idea of Medina. That all we, us, Pakistani, we love it because that brings us on one umbrella, under one umbrella, that is justice. We all struggle for justice. If we want our minorities to save and protect it, we have to fight for justice. We have to work on the prophets writing a constitution that we, every Muslim, will protect our minority.
if that is given to our minorities or to our Jewish people, to our Parsis people, to our Hindus, to our Sikh community, and even our non-believers, and the last also to Christians. And who gonna protect these minorities is a voice. And who the voice? Is Imran Khan. He is the only voice who is preaching, teaching, and educating us what is the power of love, what is the power of justice. There is no peace, there is no prosperity in the whole world, in the whole, anywhere you go to any country, there is always, because of justice, there is a prosperity, and because of justice, there is love. Because of justice, there is a peace. I want to say thank you for having me and listening to me. And be a one voice, and let's strengthen our the voice of a great man, Imran Khan. And we are brothers, and we are Pakistani. Thank you. Thank you, Francis. Now, I have a very difficult question. Anyone who wants to take it from the panel, and maybe from anyone else. There is an Indian origin professor by the name of Ashok Savan, a very prominent personality on the Twitter, who teaches at the Uppsala University in Sweden. He has often commented on the Indian diasporas. The Indian diaspora across North America and Europe, they want to basically get all the facilities and privileges and human rights of the minorities, but they do not support the minority rights within India. Is that also true of all of you? That while you want to exploit the American system as minorities, you want to progress over here, but you have never raised your voice on what's happening to minorities in Pakistan, let it be Christians, Hindus, or Ahmadiyas. That has never concerned you. Who wants to take this question from the panel? आप लेना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं, Heather. Would you like to? So, while I can't speak for the diaspora, I can speak from personal experience. And I tend to agree with the premise behind what Moeed just mentioned. I think we are not as charitable towards our own minorities as we should be, even while we're in Pakistan. I still find amongst many so-called educated, affluent, aware people living in mainstream cities, educated in the US, treating minorities as inferior beings, not as obvious as it was in my grandmother's time when they used to have separate plates and perhaps a separate glass to drink. I think we've probably come a little, but I think deep inside us, we have to reflect that if we're not going to speak up for the most vulnerable people in Pakistani society, amongst the minorities, what you're seeing today happening in Pakistan to mainstream people like us is because in the earlier days, we did not speak up when the most vulnerable amongst us were being targeted. That's a really, really huge point that we have to speak up for everybody who is targeted, who is vulnerable, whether he or she is a Christian, a Hindu, Ahmadi Muslim, a Qadiani, whatever you want to call them, whatever you're. But
You know, we got to live our life on principles, not on what we've been taught, not on what we've seen. Every human being has the same rights, privileges as any other human being in any society. Whether it's a Muslim society or it's a non-Muslim society, that doesn't matter. This is a universe of human beings. You're either a good human being or you're not a good human being. That's it. Good afternoon, Pirzada. So just to expand on the point that Heather Saab just made, you know, it's, how many of you know the name of Brian O'Connell? Junoon, right? How many of you know Wallace Mathias? Cricketer. Justice Cornelius. Justice Cornelius. See? So the reason I'm taking these names are these are prominent Christian from the Christian community, people who have contributed to Pakistan's armed forces, the judiciary, cricket, and arts and culture. If I could go, I mean, I can go on and on, but I'm just giving you just a glimpse that whenever we have, as Pakistanis, got the opportunity to see the minority community on a platform, I'll tell you that Brian O'Connell and I went to school in America. I invited him to Pakistan to be part of Junoon. I only thought that he'd be there for like 2 weeks and he wouldn't be able to. He fell in love with Pakistan. He married a Pakistani girl, has two beautiful daughters, and his favorite place on earth, aside from the United States, is Pakistan. And he's got nothing but love from the Pakistani people. Why? Because there was a platform for him to engage with the Pakistani people. Similarly, if you're Cecil Chaudhry, right? So what I'm saying is that we need to, the majority community has to embrace the minorities and provide the platform to them. Unfortunately, I'll come back to Moeed's lecture today, the garrison state. The garrison state is an artificial construct. It doesn't allow natural evolution of society, civil society. It's whatever laws that they believe in and whatever things that they agree with, you have to follow. If there was democracy in Pakistan for the last 76 years, like there has been in India, you would have seen a natural outgrowth of civil society. Minorities, majorities, mixing, whether it's arts and culture, whether it's sports, whether it's any other field. But we live in an artificial society in Pakistan, and we have to, as civilians, fight against that. I totally agree with what Mr. Francis said and what Salman said just now. And we have to do what is our duty. We're not doing that. As diaspora here, as Pakistanis overseas, we must support the minorities as we should do it. And this is, I think, everybody understands what it means. That's it. Thank you. Before I hand over this to you, मुझे कुछ थोड़ा सा comment में करना है, because my net will be lost when I give whatever it is. उसके बाद हम question answer शुरू करेंगे. मैं थोड़ा सा ये minority के issue को थोड़ा सा political science से sum up करूँ. It's not understood कि ये होता क्या है. Minority, we see minorities as minority human beings in communities, as if these are Hindus. In Pakistan case, these are Hindus, these are Christians, and these are now anything. But minority is not only a human community, minority is also a minority point of view. When you look at the subject of political science within North America and Europe, you fully understand this thing, that the law and the constitution has been designed in a way to support and protect the minority point of view. So Galileo was a minority point of view, which the church was trying to suppress. And Galileo was speaking the truth, but the majoritarian point of view was not speaking the truth. Whether it's Galileo or Copernicus, and so all the forward thrust and the lung and the push of the human society has come forward when a minority point of view has challenged the dominant point of view. Many of you are doctors, you can see
there was an Austrian doctor who said doctors should also wash their hands. I do not know if you're aware. Puerperal fever in Vienna. So doctors didn't used to wash their hands. And when the doctor said that, I think the puerperal fever is being caused because doctors and nurses are not washing their hands, the doctors and the nurses turned against him, and he had to suffer a very bad fate because they said he's blaming the doctors for the infection. So the minority point of view, now in this country the minority point of view thrives within the United States. It is not we have to support the minority point of view. If the majoritarian point of view does not support the minority point of view, then ultimately the majoritarian managers come and they hunt everyone who disagrees with them. This is the subject of political science, just like a science. Now I hand over. Can I make a suggestion? Azhar Siddiq was online. Azhar Sadiq Sahab is online. Okay. So Azhar Sadiq Sahab, this is Dr. Moeed Pirzada. Can you hear me, sir? Azhar Sadiq Sahab, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Azhar Sahab, Azhar Sadiq Sahab, can you hear me? Has he muted himself? Azhar Sadiq Sahab, can you hear me, sir? This is Dr. Moeed Pirzada here in Alabama, Birmingham. जी अब आ रही है आपकी आवाज बिल्कुल. Thank you so much for joining us from UK. A big clap for you. जी अजहर साहब, अभी आप चूंकि वकील हैं, you're constitutional expert. We were talking about how the Pakistan minorities are not protected, and minorities are not just a minority community, it is also a minority point of view. Like a lawyer and a constitutional expert can understand, the law has to be designed to protect the minority point of view. What would you add to this, sir, in terms of Pakistan? Thanks a lot for giving me time to speak on this subject. My wife is clear. What should I give to her? To my car. We can hear you. Yes. Yeah, you're good. We can hear you. Doctor Saab, my जी जी हम आपको सुन सकते हैं, बोलिए. Doctor Saab, I'm taking you all. My wife is clear, sir. Yes. Yes, yes, yes. Sir. First of all, I will let you know that our constitution of Islamic Republic of Pakistan is very clear in its object and for the purpose of protection of fundamental rights. I would like to take you all towards the obligation towards the state. Under Article C, the state shall ensure the limitation of all forms of exploitation on and the gradual fulfillment of fundamental principles for each according to his ability, to each according to his work. There is no restriction for a Muslim or anybody else. At the same time, Article 4 and 5 are very clear on the subject right of individuals to be dealt with in accordance with law. Right of individuals to be dealt in accordance with law, to enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law is inalienable right of every citizen, wherever he may be, and of every other person for the time within Pakistan. There is no restriction for anybody, whether he is a Muslim or a minority. Even if he is staying in Pakistan, our constitution has provided a very safeguard mechanism. In particular, no action detrimental to the life, liberty, body, reputation, or property of any person shall be taken except in accordance with law. No person shall be prevented
happening in Pakistan. Much better. Now, I'm speaking towards a very important fundamental right. As far as Article 9 is concerned, it provides security to a person. Article 40, it provides the quality of life, inviolability of and dignity of man. The dignity of man, it has not stated the dignity of a Muslim. The dignity of a man and subject to law, the privacy of home shall be inviolable. No person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence. And similarly, Article 15, freedom of movement, Article 16, freedom of assembly, Article 17, freedom of association, 18, freedom of trade, business occupation, 19, freedom of speech, 19A, right to, and very important article is Article 20, freedom to profess religions and to manage religious institutions. Subject to law, public order and morality, every citizen shall have the right to profess, practice, and propagate his religion, and every religion, denomination, and every sect, and I'm using the word every sect, thereof shall have the right to establish, maintain, and manage its religious institutions. आजर साहब आप मुझे सुन सकते हैं? डॉक्टर मोईद बोल रहा हूँ। आजर सदीक साहब क्या कह रहे हैं डॉक्टर? जी, मैं सवाल पूछना आपसे चाह रहा हूँ। आपने you counted and recounted several articles of Pakistani Constitution and sections of law, but despite the presence of all this body of law, what we can see obviously that the minorities are not protected in Pakistan. What do you think is the reason for that? Sir, there are individual acts, as far as our constitution and this is take up the example of Pakistan Penal Code, where certain offences, where certain rights have been protected of minorities as well. If we are interested to safeguard the life and liberty of a Muslim, on the same time, the life and liberty of minorities have been safely protected. There are certain issues which have been taken up by any mob or any particular person. They are always subjected to law. Number of FIRs has already been registered. A thorough investigation has already been under process. And at the same time, take up the path. Every such incident has been reported and has been taken to a final conclusion. Of course, there are certain issues which has to be taken into consideration for the purpose of a safe mechanism. If we have any issue with any other person or any other minority, that has to be taken up in a different manner. For that purpose, in my opinion, it has to establish a mechanism or any special authority for the ठीक है, purpose of आजर साहब stay with me. certain person. Azhar sahab, stay with me. Stay with me. Just let me take a quick comment on it from the minority leader, Francis Aziz. Francis, do you think that the laws in Pakistan exist, as the constitutional lawyer tells you? The laws do exist, but do you think the laws are able to protect the minorities, and if not, why not? See, this is the problem. You know, there are so many written things, Yes. and even we preach it, we teach it, we educate about the Masake Medina. What is big thing than that? Yes, there is no justice, there is no rule of law, and that what is Imran Khan. Imran Khan is a justice. He is a voice. That's why they put him in a jail. They put a justice in a jail. They shut us off. He was the voice for the minority. He was the light for the less privileged people. So there are many laws, but there is no, as one of us says, there is no implementation. Okay. So I also want to open up the questions. First, take two questions and then we come back to you. Can you kindly stand up and introduce yourself? Yes. Uncha bole. My name is Sarah Hayat, and you know, talking about the constitution of a country where the president is signing laws and he has no idea who's signing his laws. Right. So we're talking about the constitution or a quoting of constitution in a country where president doesn't
you have a stamp for them. Right. So I don't think that constitution proves true, Frank. And I think you guys are very magnanimous in saying that you understand about minority. I think the only time when I understood who a minority is when I became a minority in this country. Yeah. So hashtag Black Lives Matter. Try sending your kids to college as a brown person. You understand who a minority Right. is. But I think even then, the only way for me to understand minority or empathize with them to become a minority, which I understand myself now. Again, I mean, so I think the conversation that goes to what you can do as American diaspora here, being a Pakistani American. I'm a physician, so we have 500,000 Americans in the United States, right? More than 500,000 now. It's roughly about 0.2%, right? But 30% of physicians in the United States, 30% of physicians in the United States are Pakistani. So the amount of resource that we provide is phenomenal. And then, you serve your country, you serve your nation, you serve your people. The only thing I want coming to this forum is that, for human rights, we've spent like $113 million in Ukraine and, Russia. So there's a voice that's being heard. All I want is not $113 million to Pakistan, but just a voice, recognition, and as somebody said, you just have to stay on the right side. Sarah, thank you so much. So listening to Dr. Sarah makes me realize that there are a lot of intelligence and wisdom in the hall as well, which we must actually tap into. So are you ready with your speech? Yes. Go ahead. So, Dr. Sarah, thank you for bringing this up. In the last 16, 17 months, I'm sure Moeed also, we've been inundated by thousands of messages from Pakistan, the US, Europe, all across, by overseas Pakistanis saying, "Hum kya kare? What should we do?" And I said, the thing that I can do, which is my voice, help us amplify this voice. And I wanted to coordinate with Moeed, with several others. I spoke to Mr. Sabai also on the subject. And I'm bringing this up again at this forum. And please, that if all these discordant, independent voices keep doing their own little YouTube vlogging, whatever you want to call it, every evening, doing my own catharsis and yours on your behalf, it is effective. But imagine if these voices came together on a platform which is formal, which looks professional, which is like a Huffington Post multimedia. Can you imagine the power of that forum within the US, Europe, and in Pakistan? So I would urge all these people, these big names, never chapa mar mystery. Neither am I a journalist. I'm just a guy who gets very angry in the evening and starts to talk. So all these professionals who are there, I would urge them to put together some platform which unifies these voices. Thank you. Thank you so very much. Thank you. भाई सब कह रहे हैं कि मुझे भी गिल से पहले बात कर रहे हैं, बस गिल के बाद कोई बात नहीं कर सकता। I want to add, there are a lot, you said there are like 30% of doctors and physicians. Okay. What I'm going to say is there are a lot of very rich Pakistani, overseas Pakistanis here. They spend a lot of money on so many things. What they should think about now is get together, raise $5-10 million and go and buy a channel in Pakistan or create a TV channel in I would like to. I was talking last night. I was talking to last night I was talking to a person who started a channel from ground scratch to a big channel.
and he worked for a big politician, and he may be here or no. But you can buy a channel in $5 million, any channel. In $10 million, you can buy 3 channels, and you can go and buy them right now. They're on sale. If you do that, right? अच्छा अब आप लोग चुप्पी नहीं कर रहे, मुझे भी बात बदनाम आपने मुझे किया हुआ है और असल में मैंने पोस्टमार्टम इन्हीं का करना है और बोलने नहीं दे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you so very much. First of all, I really thank you all for coming and showing up on a Saturday. It's not easy for all of you, and I know there are some folks those could not understand English, Urdu. I'm sorry, and that's why we are speaking in Urdu. But let me tell you honestly, all my life I didn't understand very well English, but I still cope up with you guys. So today, if I'll speak in English, it'll be like eating a beef steak without mustard sauce, or drinking a Coke without ice. So I will pardon and I'll talk in Urdu because I talk for masses. I want my countrymen back home to listen to me and understand. So हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि minorities के पाकिस्तान और हिंदुस्तान में rights हैं कि नहीं। हमें शर्म आनी चाहिए बात करते हुए। हम इस बात करने को क्वालिफाई नहीं करते। हैदर मेहदी साहब ने पता नहीं कहाँ का किस्सा सुनाया कि इनकी दादी और नानी के ज़माने में ग्लास अलग अलग थे। हैदर मेहदी साहब, मैं फैसलाबाद से, जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, उससे सिर्फ 25 किलोमीटर दूर पैदा हुआ था। 9 साल का था, पहली दफा बिजली का बल्ब देखा था। 9 साल का था मैं, और मैं आज भी गांव में जाता हूं तो अल्लाह के करम से आखिरी नबी की उम्मत होने के नाते हम बड़ी जिम्मेदारी से क्रिश्चियंस के ग्लास और कप अलग रखे हुए हैं जब मैं आपसे बात करता हूं। लेकिन मुझे इससे मसला नहीं है, रखिए आप क्रिश्चियंस के ग्लास और कप अलग रखिए, गटरों में उनको उतारिए, सारे गंदे काम पाकिस्तान में उनसे करवाइए। बिल्कुल, आप में तो इतनी अडोसिटी है कि आपके मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ऐड देती है अखबार में, और खाकरूब की नौकरी के लिए सिर्फ क्रिश्चियंस को अप्लाई करने के लिए कहा जाता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, क्या बातें करते हैं आप करिए, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। आप जब वहां पर तारक मसीह के साथ ये सलूक करते हैं तो कीजिए, लेकिन जब आके आप यहां जॉर्ज की और स्टेसी की चुमियां लेते हैं, मुझे उससे मसला है। I'm sorry to say, मेरी लैंग्वेज थोड़ी पासिस की होती है। करिए तारक मसीह के साथ, करिए रशीदा मसीह के साथ वहां पाकिस्तान में। आपने को क्या आपकी टाइटल है? आपने पाकिस्तान बनाया था इस प्रीटेक्स्ट के साथ कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान माइनॉरिटी में है, और अगर आपको मुल्क ना मिला, आजकल वैसे मोईद साहब ने लठ उठाई हुई है अलामा इकबाल के खिलाफ के। अलामा इकबाल जो है ना, वो बड़े जेन्युइन स्कॉलर नहीं थे, बस ऐसे ही उन्होंने नकल मारी थी। मोईद साहब, खुदा का नाम लीजिए, जाने दीजिए, जो हमारे हालात थे उसमें हमें स्कॉलर भी, तो मेरा मतलब अब आप किस तरह के स्कॉलर हमारे ढूंढे। बड़ी मेहरबानी है उनकी कि जो वो लिख गए थोड़ा बहुत हमें हीट दे गए। अब अगर आज के दिन आपके पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो शहबाज गिल जैसे हैं, तो उस जमाने में गुलामी के दिनों में एक बंदे ने, बेचारे ने कुछ ना कुछ आग भड़काई, जहां जहां से भी कोई आइडिया मिला, गलत जगह से मिला, सही जगह से मिला, उसका मैसेज तो ठीक था कि बेशर्मो उठो, 800 साल से कभी महमूद गजनबी आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, हम उनको कहते हैं आए जी, आप भी आए, आप भी आए, आप भी आए, सबके सामने हम लेटते रहे। उसने कहा इस गुलामी से बाहर निकलो, खड़े हो, मैसेज उसका देखें। अब देखिए ना, मैं अमेरिका में आया था तो मैं पहले लाइनें किसी और की ही जोड़ के बोलता था ना अंग्रेजी। मैं 11 साल का था, पहली दफा ABC देखी थी, फिर पता चला छोटी भी लिखनी सीखनी है 4 लाइनों में। So anyways, मैं आता हूँ, फिर मेरी तकरीर लंबी हो जाती, फिर दोस्त माइंड करते हैं, पढ़े भी जाते हो। और तो माइनॉरिटीज का मसला ये कि हमने पाकिस्तान बनाया था कि हमने एक माइनॉरिटीज के लिए मुल्क बनाना है जहां माइनॉरिटीज प्रोटेक्ट हो, ये पूरे का पूरा थॉट प्रोसेस था। और फिर हमने वहां पर ऐसी लैब बनाई कि हमने लोगों को दिखाया कि अब हम बताते हैं माइनॉरिटीज के साथ यहां क्या करते हैं। तो ये बेशर्मी, असल में माइनॉरिटी जैसे ही मेजॉरिटी बनती है, बेशर्मी शुरू हो जाती है।
अभी हमारे ही साथ वाले हिंदुस्तान के अंदर बीफ नहीं रख सकते फ्रिज में, मार मार के दुम्बा बना देते हैं, लिंच कर देते हैं वो। अब वहां पर बीफ रखने का मसला है, यहां पर माइनॉरिटी जो है उसको आप एक झूठा सच्चा खुद से खत लिखो, कहो इसने ब्लास्फेमी की और उसके बाद लटका दो, चर्च जला दो, जो मर्जी कर दो। पाकिस्तान के अंदर हम डरते हैं। मेरे पे एक दो दफा इल्जाम लगा दिया गया ये कादियानी है, अहमदी है, मुझे वीडियो जारी करनी पड़ी, मुझे इमरान खान साहब ने बताया जारी करो तुम्हें मार देगा कोई सड़क पे जाते हुए। मैं वजीर था उस टाइम हुकूमत में। वो वहां सभी को सभी से खतरा है। वहां असल में आजाद सोच माइनॉरिटी है। अगर आप सोच रखते हैं तो आप माइनॉरिटी। मोई साहब, असल में ये लोग अपना काम छोड़ के यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं आए हुए, मसला इनका ये, वो पढ़ चुके पैसे कमाते हैं। डॉक्टर साहब आप बहुत धड़ल्ले से पैसे कमाती हैं, यूनिवर्सिटी का लेक्चर सुनने नहीं आए। और 18 साल यूनिवर्सिटियों में पढ़ा के मैं भी बोर हो गया हूं। अब ये चुटकुले सुनने आते हैं, अपनी हालतेदार पे हंसने आते हैं और हमारी हालतेदार पे हंसने आते हैं। तो लाइटर बातें कीजिए। इतनी देर आधी से ज्यादा पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो डायबिटिक है, इतनी देर छुछू रोक के नहीं बैठ सकते, इतनी लंबी बातें आप लोग करते हैं। वापिस आते हैं मिनॉरिटीज पे। मिनॉरिटीज में क्या करना है, एक और ही बात, आप मेजॉरिटी की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में औरतें 51% हैं, मिनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी है। पूरे गांव में लाठी लेके जो मर्द हैं वो बाहर बैठे हुए हैं कि सुसरियां बाहर निकलें तो सही, नहीं निकलने देना उनको बाहर। उनको घर के अंदर बैठाया हुआ है, उन्हें लॉक किया हुआ है। उनकी हिफाजत में एक बंदा घर में बैठा हुआ है जिसने उनको बाहर नहीं जाने देना। अच्छा, अगर पढ़ लिख के यहां आ जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, पहले तो हमने कामयाब, सख्त किस्म की कामयाब प्रोफेशनल बंदी से शादी करनी है, ये हमारी डिजायर है, क्योंकि फिल्मों में देखा है कामयाब बंदों की बीवियां ऐसी होती हैं। अब जब शादी कर ली तो हमने उन्हें सख्त किस्म की हमीदा बनाना है। दिन रात उसके ओपिनियन से हमें प्रॉब्लम है, ओपिनियन क्यों लेती है, वो सोचती क्यों है, वो अपनी मर्जी क्यों रखती है। हमें किचन के अंदर हमारी बीवी जुबैदा आपा चाहिए, सारे उसके टोटके नुस्खे वो होने चाहिए। और हमें किचन से बाहर हमारे बच्चों के साथ वो बल्कीस ईदी आपा की तरह की शफीक मां चाहिए, जो सब कुछ छोड़ के हस्बैंड और बच्चों की ऐसे खिदमत करे कि सब कुछ भूल जाए लोग। और हमें बेडरूम के अंदर जेनिफर लॉरेंस चाहिए, मैं कहने लगा था मधुबाला चाहिए। और हमें अगर वो हमारे साथ बाहर जाए तो अगर वो किसी मर्द की तरफ देख के सलाम भी ले ले तो हमें प्रॉब्लम है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सारे मर्द मेरी बीवी को जरूर देखें कि मेरी कितनी खूबसूरत बीवी है। सो एक कंफ्यूज नेशन है। असल मसला माइनॉरिटी मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन किसी चीज का नहीं है, कंफ्यूजन का है। सारी उम्र हमें ये बताया गया पीआईए दुनिया के बेस्ट पायलट हैं। भाई 6 तो जहाज हैं आपके पास, बेस्ट पायलट आप कहां से आ गए। पाकिस्तानी डॉक्टर दुनिया के बेस्ट डॉक्टर हैं। वो खुदा का नाम लो भाई, 60 सालों में एक भी डॉक्टर ने कोई किताब नहीं लिखी अमेरिका में आके। काहे के बेस्ट डॉक्टर हैं ये, धंधा कर रहे हैं। इनको चीप लेबर चाहिए थी, इन्होंने हमें वहां से ले आए। हम डॉक्टर बनाते गए, प्रिंट आउट में से प्रिंट निकालते गए धड़ाधड़। हमारे वाले यहाँ आ गए, दबा के मजदूरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, एक ही काम है डॉलर छाप रहे हैं दिन रात, और कोई काम नहीं है। कोई एक बताइए को हफिंगटन पोस्ट पे लिखता हो बड़ा, किसी एक ने कहा हो मरने से पहले मैंने पाकिस्तान के अंदर लम्स के अंदर कोई कैंसर की ट्रीटमेंट का बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाना है, यहाँ रिसर्च हो। बस 2 ही काम है, अपने बच्चे आईवी लीग में ले जाओ। पहले भी मैंने 20 दफा कहा है, क्वालिटी सेक्ट पे बड़ा घर बना लो, पीछे पूल हो जिसके अंदर फिर बेगम को नहीं जाने देना, साथ वाला देखेगा। इधर की हम कहां की बड़ी तो कामयाब हम लोग हैं, ऐसे ही बेस्ट हमारी, अच्छा जी हमारी इंटेलिजेंस कंपनी सर्विस बेस्ट है, हमारी फलां चीज, हर चीज में हम बेस्ट हैं, डॉक्टर हमारे बेस्ट हैं। तो भाई फिर हम वर्स क्यों हैं, हमारे ये हालात क्यों हैं, हालात इतने पतले क्यों हैं। अब मैं मीडिया की तरफ आता हूँ। मीडिया का आपको धंधा, क्योंकि मैं तो डील करता रहा हूं उनके साथ। घी बनाने वाले ने मीडिया बना लिया। अच्छा, अभी शाहीन साहब बता रहे थे एक बेकरी वाले हमारे दोस्त ने मीडिया बना लिया। खुदा की कसम, लाहौर के अंदर, ये मैं झूठ नहीं बोलने लगा, लाहौर के अंदर एक ऐसा, ये जो जब डीएचए बनता है ना और एक्सपैंड होता है तो गंदा काम डीएचए खुद नहीं करता, गंदा काम वो खुद नहीं करते, किसी और से करवाते हैं।
इर्द गिर्द विलेजेस होते हैं, कई लोग अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते होते, ये पाकिस्तान में एक्टिवली होता है, मैं गवर्नमेंट में रहा हूं इसलिए मुझे पता है। तो वहां पर गुंडे हायर किए जाते हैं हर इलाके में, उन्हें कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है। उनको ये बताया जाता है कि ये जमीन हमने खरीदनी है, जाओ लोगों को तंग करो और उन्हें मजबूर करो वो बेचे और हमें जमीन खरीद के दो। तो वो जो गुंडे होते हैं वो अपने नाम पे स्टाम्प पेपर पे जमीन खरीदते हैं और फिर वो डीएचए को या दूसरी कॉलोनीज को बेचते हैं, और डीएचए ये एक्टिवली करता है। लाहौर में बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिनको मैं जब गवर्नमेंट में थे हम डील किया करते थे। एक दफा हमारी पुलिस वालों ने उन कॉन्ट्रैक्टर्स को उठा लिया, फीमेल एसपी थी, पड़ गए रौले, बीच में चीफ मिनिस्टर, मैं, भाई लोग आ गए, उन्होंने कहा छोड़ो अभी ये तुम्हारे डीएचए के लिए काम कर रहे हैं। हमें लेने के देने पड़ गए कि ये ना हमारे पुलिस वाले ही अंदर हो, फीमेल एसपी थी, क्या बनेगा। बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई, इज्जत बचाई हमने, उनकी भी अपनी भी। तो बहरहाल अब वो जो एक भाई साहब जो गुंडे थे जिनका काम उनके लिए कब्जे करना था, उन्होंने भी चैनल बना लिया है, उनका भी चैनल चल रहा है। मैं नाम नहीं लेता, यहाँ पर रहने देता। अरे अलीम खान तो खुद प्रॉपर्टी टाइकून है ना, यहाँ गलत कह रहे हैं। अलीम खान किसी के लिए कब्जे तो नहीं करता, वो तो खुद प्रॉपर्टी टाइकून है, ये किसी और का है, आप सोच भी नहीं सकते मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो कहने की बात ये है, अब वो क्या करते हैं, एक और भाई साहब मेरे पास आए, कारोबारी हैं, उन्होंने कहा शहबाज जी आजकल एफबीआर तंग बहुत कर रहा है, आप गवर्नमेंट में कोई मदद कीजिए। मैंने कहा हम तो नहीं कर सकते, हमारी तो पॉलिसी नहीं इंटरफेयर की। उसने कहा फिर आप मीडिया करते हैं, को मुझे 2-4 एंकर ही दे दें, मैं चैनल बना लूं, फिर उनको छोड़ा करूंगा, एफबीआर के ऊपर तो बात आ जाएगी। तो हर एक ने अपने 4-4 रखे हुए हैं, वो छोड़ दिए जाते। आप सब एक स्कॉलर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मीडिया के, शाहीन साहब जितना ही सीनियर आदमी है, मैं भी बचपन से उन्हें सुन के मोटिवेट होता था कि क्या वो जबरदस्त क्या वो जबरदस्त बातें, यार इनको बताएं, घर की बातें बाद में कर लें। क्या वो जबरदस्त बातें करते थे। एक दफा वो हमारी हुकूमत से नाराज हो गए, खान साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई कि इनको जरा राजी करें, बहुत ज्यादा खामखा हमारे खिलाफ तनकीद कर रहे हैं। मैंने उनसे मिलने जाना था, उससे पहले टटोला कि क्यों नाराज हुए, हुआ क्या। वो तो हमें बड़ी फेवर करते थे। पता लगा मुस्लिम लीग नून के जमाने में उन्हें 6-7 पुलिस के गार्ड्स मिले हुए थे, जो हमने आके 2 या 3 कर दिए। वो इस बात पे खफा है कि मेरे गार्ड वापस पूरे करो। आप नहीं, आपके जितने एक्सपीरियंस मैंने कहा है। अच्छा, ना, दोबारा शाहीन साहब तो यहाँ रहते हैं, इन्हें हमने क्या गार्ड देने। मैं ये कह रहा हूँ शाहीन साहब के जितने एक एक्सपीरियंस साहब हैं, तो बात यह है कि उनकी जाके मैंने मिन्नत अल्लाह की, गार्ड वापस किए, तब जाके बात बनी, क्योंकि दिन रात हमारे खिलाफ डंडा उठाया हुआ था। तो असल में मुनाफिकत है, असल में कंफ्यूजन है, कोई पता नहीं है जाना किधर है, करना हमने क्या है, और हम पहुंचना कहां चाहते हैं एज अ नेशन, और खामखा अपनी तारीफें किए जा रहे हैं। मसला हमारा ये है कि हम खामखा अपनी तारीफ और अपने आप को, ये जो हमने एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट का कहा हुआ है ना, इसने हमें यहां तक पहुंचाया और तबाह किया। अब मैं आपको थोड़ा बताता हूं पॉलिटिकल। आप कहेंगे सब पे बात कर ली, अपने पे तो आप बात नहीं करते। अब पीटीआई के अंदर और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में आप कहते हैं कि आप ये कर दें, आप वो कर दें। मुझे को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन इसका क्या मतलब लड़ना छोड़ दें? लड़ना तो है। मसला ये है कि अगर आप उन बड़ी फैमिलीज में से लोगों को लाते हैं पॉलिटिक्स में, तो उनकी मिल्स है, उनके बड़े बड़े कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है, वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जब आप मिडिल क्लास में से लाते हैं, जिसके पास मोटरसाइकिल है, उसके और रौले हैं, वो अपनी भूख खत्म करता है आते ही। अब मैं अपने इर्द गिर्द भी बहुत सारों को देखता था जो ऐसे था जैसे 50 दिन का भूखा बंदा इक़्तिदार पे छोड़ दो, जो वो हशर करता है। तो मिडिल क्लास के जो लोग आते हैं वो मोटरसाइकिल से लैंड क्रूजर पे जाना चाहते हैं। अब आगे भी आपके दिल टूटने, मैं बहुत सारों को जानता हूं, अपनी तरफ भी जानता हूं, जो मोटरसाइकिल पे फिरते थे और अब लैंड क्रूजर्स पे फिरते हैं। अब आज नहीं तो कल आपको उनके भी मामला सामने आने हैं। फिर आपको, तो बुनियादी तौर पर कौम की मोरालिटी तबाह हो गई है। करप्शन को बुरा नहीं समझा जाता, कोई किसी की हेल्प करने को तैयार नहीं है। नेशनल जो इंडेक्स है वो ह्यूमैनिटी का, एजुकेशन का, हेल्थ का, उसके ऊपर एज अ कौम हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं। मुझे एक कार्डियोलॉजिस्ट मिली, उन्होंने एक बात सुनाई, 2-3 मिले असल में इकट्ठे। उन्होंने कहा कि एक पेसमेकर जो है दिल का, वो 6 से 10 लाख के दरमियान पड़ता है। पाकिस्तान में अमीर आदमी का पैसा है, वो तो लंदन से, दुबई से, कहीं से डलवा लेता है। गरीब आदमी जिसके पास दवाई लेने के पैसे नहीं, ब्लड थिनर खाने के पैसे नहीं है 6 महीने, वो कहां से डलवाएगा पेसमेकर? वो वैसे ही मर जाएगा।
और कहेंगे कि अल्लाह ने इतनी लिखी थी। ओ भाई नहीं, अल्लाह ने लिखी थी इतनी। अल्लाह ने इधर लोगों की 90-90 साल लिखी हुई है, तो आपकी भी लिखी हुई है, आपकी करतूतों की वजह से हम जल्दी जाते हैं। सो वो फौत हो जाएगा बेचारा। तो यहाँ पर आपको पता है टेक्नोलॉजी जल्दी चेंज होती है, तो बहुत सारे लोग पेसमेकर चेंज करवा लेते हैं लेटेस्ट। तो जो निकलता है उसे क्लीन करके अच्छी तरीके से स्टोर करके, बहुत सारी एनजीओज हैं जो थर्ड वर्ल्ड और गरीब मुल्कों में वो लोगों को लगाती हैं। उसकी अभी उम्र 7 साल रहती होती है पेसमेकर की, 6 साल 8 साल, तो वो चलता रहता है, उनकी लाइफ बढ़ जाती है। एक रेडी वाला, रिक्शे वाला, उसको तो पेसमेकर का ना कॉन्सेप्ट है ना खरीद सकता है। तो जब इन्होंने पाकिस्तान में ऑफर किया, तो पाकिस्तान का जो ड्रेप जो वहां अदारा है, उसने इन डॉक्टर्स को ये कहा कि ये यहाँ रिलीजियस मसला बन जाएगा, यहूदी के जिस्म का निकला हुआ गैर मर्द का पेसमेकर यहाँ किसी खातून के जिस्म में लगा देंगे आप। Now, how can you beat such kind of confusion and such kind of situation? अच्छा, आप आखिरी बात और उसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा। मोईद मुझे घूर घूर के देख रहा है, हर जगह इसका मेरा यही मसला है, इसको वक्त से मसला है। अच्छा, अब मसला ये कि आखिरी बात आपको करूं कि आप सोचते हैं कि जज दिलावर कहां से पैदा होते हैं? पेसमेकर में से निकला ये जज दिलावर, मतलब इसको कौन सा पेसमेकर लगा हुआ है जज दिलावर? ये गैरिसन स्टेट की इन्होंने बात की। अच्छा, और आपको लगता है कि क्या आइंदा जज दिलावर पैदा होना बंद हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। आपको मैं कुछ चंद बातें बताता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि जज दिलावर कहां से पैदा होते हैं। 25 मई का वाकया आपको याद होगा। 25 मई 2022 पुलिस ने बहुत फेंटा फेरा लोगों की, औरतों को, मर्दों को, घरों के अंदर घुसे। हमारे फैसल एक कारकुन था लाहौर के अंदर, शहीद हुआ। एक मेजर साहब थे, उनके घर में पुलिस कूदी, वो भी हमारा ही बेटा था पुलिस वाला जो है, उन्होंने अंदर से गोली चलाई कि कोई डाकू आया, वो पुलिस वाला शहीद हो गया, मारा गया या शहीद हो गया, जो भी आपने कहना, मौलवी हजरात फैसला करेंगे, मैं तो कोई नहीं हूँ, क्योंकि मजहब का फैसला वो करते हैं, समझ रहे हैं। सो उसके बाद हमारी गवर्नमेंट आई, जुलाई में हमने 16-17 सीटें जीती, हमारी गवर्नमेंट आई। पंजाब के अंदर हम आ गए। जब पंजाब के अंदर हम आए तो जाहिर बात है, हमने प्रॉमिस किया था लोगों के साथ कि 25 मई वालों के ऊपर हम एक्शन लेंगे। अब हमने पुलिस को कहा कि जी फाइंड आउट एंड रजिस्टर एफआईआर जिन्होंने कानून से तजावुज किया। तो बड़े घर से, ये मुझे खुद पुलिस चीफ ने, क्योंकि हम रोज प्रेशर डालते थे उन पे कि आप काम करें, बड़े घर से पुलिस चीफ ने मुझे आके बताया कि मुझे बड़े घर से एक छोटे से रैंक का बंदा आया, वो मेरे सामने बैठा, उसने कॉफी पी, उसने कहा कि अगर किसी एक भी पुलिस वाले के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई जो उसमें इन्वॉल्व था, फिर तेरी खैर नहीं, चुप करके नौकरी करो, बाकी बंदे जितने मर्जी नून वाले अंदर डालने वो डालो, जिसको मर्जी करो, ये जो पुलिस वाले हैं इनके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। तो जो भी होता है ना चौधरी, वो भले दुनिया का चौधरी अमेरिका हो और अपना एसेट नहीं छोड़ता कहीं पे भी, इसी तरीके से जो भी चौधरी होता है, पाकिस्तान के चौधरी वो हैं, वो अपने एसेट्स नहीं छोड़ते, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सही कह रहे हैं। उन अफसरान को ये पता है। मुझे कंप्लीट करने दो। अजहर सदीक साहब बहुत वेट कर रहे हैं। मैं एक सेकंड, इन लोगों को आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और वो हमेशा हर जगह उनके एसेट्स हैं। ये जो मौलवी हजरात अचानक किसी के ऊपर मजहब का दे देते हैं, अचानक चढ़ दौड़ते हैं किसी के ऊपर, वो मौलवी हजरात की भी फिल्में वहीं पर हैं। हर शख्स की फिल्म रखी हुई है, किसी की फाइनेंशियल फिल्म है, किसी की इखलाकी फिल्म है, हर बंदे की कोई ना कोई कमजोरी है। कौम पूरी की पूरी कंफ्यूज हुई खड़ी है। और उसके साथ साथ एक इमरान खान था जो चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर सीधी बात करो, पाकिस्तान के अंदर अब इस सारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइज करो, जो आप माइनॉरिटीज के साथ करते हो, औरतों के साथ करते हो, बच्चों के साथ करते हो, गरीब के साथ करते हो, ये ब्यूरोक्रेट्स, जजेस को आप जिस तरीके से प्रोटेक्ट करते हो, इस सब को आप लोग छोड़ो। और उसी को हमने क्या किया, हमने ये नहीं किया कि उसकी बात नहीं सुनी, हम अब उसे निशाने इबरत बना रहे हैं। हमने अब उसे एक ऐसे सेल में डाला है जहां पाकिस्तान का कोई छोटे से छोटा कारोबारी बंदा या ग्रेड 16 का बंदा भी नहीं डलेगा, वो भी प्रिविलेज्ड होगा उस सेल में। क्योंकि मैं उसी तरह के सेल में रहा हुआ हूं, मैं आपको बता नहीं सकता कि वहां क्या अजियत होती है। खुला टॉयलेट है इंडियन, आपको यही लगता है आपको बाथरूम के अंदर बंद किया, क्योंकि आप असल में बाथरूम के अंदर है। असल में बाथरूम।
तो आपके ऊपर कैमरास लगाए हुए हैं, आपकी 24 घंटे आप बाथरूम यूज कर रहे हैं तो आपकी वीडियोस बन रही हैं। तो इमरान खान को एक मिसाल बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में आइंदा कोई नाम ना ले ह्यूमन राइट्स का, रूल ऑफ लॉ का, डेमोक्रेसी का, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई नाम ना ले। और सारे मिले हुए हैं, मीडिया से लेके जजेस से लेके, अकेला जज दिलावर नहीं है, ब्यूरोक्रेट से लेके, और जिन ब्यूरोक्रेट्स ने, जिन आईजी ने, जिन लोगों ने बदतरीन रोल प्ले किया लोगों की औरतों के ऊपर जुल्म करने का, उनको आप सदारती हुस्ने तमगाए, हुस्ने कारकर्दगी इस 23 मार्च को देने जा रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर सफर दुरुस्त सिम्मत की बजाय उल्टी सिम्मत में जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो अजहर सदीक साहब मुझे कह रहे हैं कि उनको भी ले लें। ठीक है अजहर सदीक साहब, आपको आवाज आ रही? चलें जी, इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूं। मैंने आपसे यही बात करनी थी। तो असल में कंफ्यूजन है, वो जब तक हम दूर नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हम यहाँ पर तकरीरें जितनी मर्जी कर ले, हम अपने आप को बेस्ट कह लें, हम कहीं बेस्ट नहीं, नंबर्स में हम जरूर हैं, बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं, हम 5वीं बड़ी हैं, उसी वजह से हम यहाँ 30,000 डॉक्टर भी हैं। वो नंबर गेम है और कुछ नहीं है। प्रोडक्टिवली हमने कोई काम नहीं किया। CNN पे देखता हूं तो वहां पाकिस्तान का इधर का जो सर्जन जनरल है वो इंडियन बैठा होता है। बता आप मुझे रहे कि पहले के आप आए हुए हैं 30,000 आप में से एक सर्जन जनरल नहीं निकलता भाई। क्यों नहीं निकला कभी भी? अभी ना निकले तो 10 साल पहले निकाल लेते। तो हमारा मसला ये कि हमने ना ही पॉलिटिक्स में इन्वेस्ट किया है, ना यहाँ पर आके इनका हिस्सा बने हैं, ना हम बनना चाहते हैं। तो हमें अंदर से सोचना पड़ेगा, डायस्पोरा को भी सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। Shabazz, thank you so much. Azhar Sadiq sir, can you hear me? Azhar Sadiq sir, जी जी, मुझे पता चला कि मैं देख नहीं सक रहा। मेरी आवाज आ रही है जी? जी बहुत अच्छी आ रही है। मुझे बताया कि आप कोई कमेंट करना चाह रहे हैं, प्लीज गो अहेड। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब, देखिए जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट। देखिए मैं अभी तो राइट नाउ तेरा फर्स्ट ऑफ मुझे थोड़ी सी इजाजत जरूर दीजिए। प्रेजेंट सिनेरियो में बात जरूर करना मैं चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो इशू है ना, भी हम सब या ऑल ऑफ अस वी आर सिटिंग हियर, हाउ टू हैंडल द प्रेजेंट सिचुएशन इन पाकिस्तान। अब दो इश्यूज आपके सामने आ चुके हैं। इस वक्त राइट नाउ इट्स अ टाइम ऑफ इलेक्शन, बट द पावर कॉरिडोर्स आर नॉट अलाउइंग द इलेक्शंस टू बी हेल्ड इन टाइम। और अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह का स्टैंड ले रही है, तो उसमें वी आर ट्राइंग टू हैव अ लेवल बेस्ट। In my opinion, apart from the other issues which I'm going to address over here, two issues needs to be settled at a national and international level. Elections should be held as early as possible within the stipulated time, and no party should be allowed to drag on the holding of election on any issue, including the so-called delimitation issue. Sir, it's a very important issue. Remember it. Under the Constitution, President has the power to announce the date of election. I had written down number of letters, and on my letters, President has directed the Election Commission to have a consultation on the subject. No party is favoring on this issue. All of us should come together with a resolution or an ultimate solution that we should force the political parties within Pakistan to come on a single track. वो एक पेज पे आए और आकर बात करें कि आकर इलेक्शन कराएं फौरी तौर के ऊपर। और सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक साहब और इमरान खान के साथ हो रहा है, इसमें आप लोगों को इंटरनेशनल डायस्पोरा के लोगों को आना होगा। आप छोड़ दें बाकी लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करें, उन्हें कहें, बताएं आकर ये जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है, आप लोग सारे क्या कर रहे हैं, आप लोग खामोश क्यों बैठे हुए हैं। सारी सियासी जमातों को एंगेज करें दो इश्यूज के ऊपर, राइट टू फेयर ट्रायल, पीपल्स ऑफ लॉ विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान। ये बहुत जरूरी है सर। स्टेज के ऊपर हम सिर्फ इसी लड़ाई में लड़े रहे फिर रह जाएंगे। ये टाइम कि अगर हम इलेक्शन कराने में कामयाब हो गए तो बहुत पॉजिटिव चीजें आ जाएंगी सामने। और आपको पता है इमरान खान के दौर के अंदर माइनॉरिटीज का जिस तरह राइट प्रिवेंट किए गए,
में बात हाँ, होगी अच्छा मतलब we understood you. There is some kind of sound problem. We understood you. Thank you so much. Let me go ahead to Salman. Salman, ये quick question जी बिल्कुल। अच्छा ख़वातीन हज़रात, की जो अभी अज़र सदीक साहब ने जो बात की ना, इसको अब कॉल टू एक्शन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए 26 जुलाई को मेरी स्टेट डिपार्टमेंट से मीटिंग हुई, जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, ठीक है, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने ट्वीट की थी कि हम पाकिस्तान से हम चाहते हैं प्रोडक्टिव डेमोक्रेटिक प्रॉस्परस पार्टनरशिप, ठीक है। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा देखिए जी, आपने ये ट्वीट तो कर दी, लेकिन आपको पता है कि हालात जो है पाकिस्तान के इस वक्त, किस तरह आप प्रोडक्टिव डेमोक्रेटिक और प्रॉस्परस पार्टनरशिप चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे ये यकीन ये और बहुत स्केप्टिसिज्म है लोगों का कि कभी भी अमेरिका जो है ना फौज के पीछे से नहीं हटेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हम पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, ठीक है। ये 30 तारीख को, इस 30 तारीख को डॉक्टर काजी, मैंने आपको वो व्हाट्सएप पे भेजा भी है, अगर आप जितने अटेंडीज हैं उनको भेज दें। 30 तारीख को स्टेट डिपार्टमेंट पाकिस्तान के इस फ्री फेयर इलेक्शंस और डेमोक्रेटिक पाथ पे एक सेमिनार कर रहा है। देखिए हमें बॉम्बार्ड कर देना चाहिए उनको कि आप राइट साइड ऑफ हिस्ट्री पे खड़े हो, आप जमहूरियत के साथ खड़े हो, फ्री फेयर इलेक्शंस, रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हो, और जितने भी प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, सपोर्टर्स हैं, जो खवातीन बच्चे जो बंद किए हुए हैं, उनको इमीडिएटली रिलीज करवाएं। आप आवाज बुलंद करें इसके। तो ये आप सारों की एक ड्यूटी है कि आपने खत लिखना है या ईमेल लिखनी है, वो काजी साहब से आप ले लेना, वो जो है कि हम 12 नवंबर, मुझे ये बताया गया था कि अमेरिका पाकिस्तान को ये बता रहा है कि 12 नवंबर को इलेक्शंस होने ही होने। सो लेट्स होल्ड द यूनाइटेड स्टेट्स अकाउंटेबल। आर यू विद मी? अच्छा, इसको लेट्स ओपन दिस, क्योंकि हम इसको क्वेश्चन आंसर्स के लिए खोलते हैं, और मैं थोड़ा सा 1-2 गाइडलाइन इसमें दे दूं। हमने ये ऑब्जर्व किया है, पाकिस्तानी जहाँ कहीं भी दुनिया में वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, वो कमेंट फिल कर देते हैं। तो इसका एक साइड इफेक्ट, नुकसान ये है कि जब आप स्टेट डिपार्टमेंट में कहीं भी देखेंगे दुनिया में, सो पाकिस्तानीज ऑफर वेरी लॉन्ग कमेंट, बट दे नॉट एबल टू आस्क अ टीजिंग क्वेश्चन. Teasing question is something that really challenges the responder, how Secretary of State हो या Ambassador हो, कि भी आपने ये कहा था, इसका क्या मतलब है. So try to ask questions, stand up, introduce yourself, अपने आप को बताएं, and then be एक सेकंड जिसने सबसे पहले हाथ खड़ा किया पहले, जी प्लीज सर. Yes, my name is Adil Ahmed and I'm from Atlanta, Georgia. I have आपका नाम क्या है? Adil Ahmed. Adil Ahmed from Atlanta, Georgia. Yes, जी. sir. So I have a couple of questions. सर एक पूछे. But I'm Pakistani also, so I have to make some comments too, right? Okay, so the first thing we've been looking at, different your channel. We follow you, Moeed, and other forum too. You guys, only physicians, you get together and you do other things. I'm from IT department. There are so many other people from different departments. How can we get involved with you guys? Is there a forum, a WhatsApp group? How can we get in touch and get together and raise our voice? It's a very good question, Adil. Thank you so much. कि कैसे हम मिलके ज़्यादा बेहतर तौर पे रिजल्ट जो है शो कर सकते हैं. एक क्वेश्चन अब यहाँ से भी वहाँ भी वो पूछ रहे थे, लेकिन आप पहले देते बताइए जी. Moeed, I want to make one comment. Sir, maybe please. जी. My question is that I heard some very good. What's your name? My name is Dr. Durshi Zuberi. And you are in here. I am from Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia. Gee, and I have been following you in Dallas and everywhere else, and I listen to you guys almost every day. Thank you. Every day. Thank you. But my question is that we did not touch at all a very sensitive thing like cipher. And I want to know that what do you think about this? What do you think about the cipher? ठीक. So ये दो questions हैं. इसके हम who would like to answer the cipher question? Who would like? Anyone? You like to take up the cipher question? जी please.
Ji, Tawni. So, it quacks like a duck, it walks like a duck, it is a duck. The cipher is an absolutely unadulterated, pure indication of American intervention in trying to remove a legitimately elected government. This could not have happened, and if you have read the cipher, it says that what is his name? Donald Lu would consistently refer to getting directions from the White House on what he was talking about, right? This is what Ambassador analyzes in the end. in the end. So there's absolutely no doubt about it. Now the plausible deniability that came subsequently is very interesting. Somebody who's close to the State Department and does private work for them as a consultant, and you guys probably know them, he's set off a 17 tweets thread saying, actually, Donald Bloom did it on his own, and it happened as a consequence of internal rivalry between the State Department for brownie points. I mean, if something could be as ridiculous as that. So this, and it was released to Saeed by the State Department to kind of. So if anyone has any doubt, I mean, look at it. The President of the United States does not even call the sitting Prime Minister for 2 years. Does not invite him to the climate summit. So, I mean, what is the messaging? You don't want this guy, right? So you have to kick him out. And the best way to kick anyone out in Pakistan who's legally elected is to buy off the army chief. And if I am given an opportunity today to speak, I'd like to speak on that subject. डॉक्टर साहब अगर आप मुझे अलाउ करेगा साइपर पे एक बात करना चाहूंगा मैं बड़ी क्विकली कीजिएगा क्विकली गो अहेड एंड अच्छा सर अच्छा मैं देखिए मैं आप चूंकि ये बड़ा प्लेटफॉर्म है हम देखें एक हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन दिया है फॉर अ जुडिशियल कमीशन इस इशू के ऊपर बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जी और उस कॉन्टेक्स्ट में मैं चाहूंगा कि आप लोगों की तरफ से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोगों का है कि आप लोग आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखें कि इसका एक जुडिशियल कमीशन और आपको पता है कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी हुई है इसमें शाम महमूद पिरज़ादा अरेस्टेड हो गए और नेक्स्ट अरेस्ट जो हो रही है पॉसिबल जो है वो इमरान खान साहब की हो रही है जो कि मंडे को उनकी रिलीज ऑर्डर आ जानी है सस्पेंशन हो जानी है इट्स अ वेरी हाई टाइम कि हमें इस इशू को इस कॉन्टेक्स्ट में हम अब अभी फिलहाल अगर ब्लेम ना भी करें लेट्स हैव अ जुडिशियल कमीशन ऑन दिस सब्जेक्ट जो इस सारे मैटर्स को बैठकर बड़ा माइन्यूटली देखे थैंक यू राइट अच्छा अब उसको किस क्वेश्चन को आंसर किसी ने नहीं किया तो चले यार ब्लू शर्ट या गो अहेड स्टैंड अप एंड अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल है मैं यहाँ यूएवी हॉस्पिटल में पल्मोनरी क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट में रोटेशन कर रहा हूँ सर today we have established the facts that we live in a garrison state, we are part of it, and to a very large extent, a banana republic. But I wanted, as a confused youth, I wanted to understand the reason behind it, the entities that are in that have the driving stick behind all of this. Why have they been doing this for the last 75 years? What's their motive? Is it financial gain? Is it control? And I mean, in human history, does this example exist? जिस तरह पाकिस्तान को रन किया जा रहा है the motives behind it I mean you all are political science experts you have distinguished careers in them ठीक है and what did you understand अली अब्दुल्ला yes अब्दुल्ला एक क्वेश्चन और ले लें यहाँ से जी डॉक्टर Thank you, Dr. Moeed. I think I have asked you this question one-to-one, but today I want to ask Dr. Shabazki the same question. There were 4 opportunities in last year and this year for revolution in Pakistan. One was April 9th, second was May 25, third was November 26th, and the fourth and the last was May 9th this year. And probably you can say the fifth one when Imran Khan was arrested. What's happening when Imran Khan is more popular than Turkish president and many other leaders? Those people can go in front of tanks
but we could not bring a revolution in Pakistan. If it doesn't happen today, it cannot happen ever. ये एक सेकेंड, ये आपके सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ, डॉक्टर किल नहीं दे सकते। मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर किल नहीं दे सकेंगे। आप ट्राई करना चाहते हैं? जब हम यूनिवर्सिटी के ज़माने में थे तो इन्होंने ऐसे एक दफ़ा मेरे साथ और भी शर्त लगाई थी, उसके बाद से फिर इन्हें नजमा से शादी करनी पड़ी। ओके, अच्छा देखिए, दो बातें। पहले तो आपका सवाल कि पाकिस्तान में आज जो हालात है वो गैरजन स्टेट क्यों बनी। कल भी हम इस पे बात कर रहे थे। असल में इशू ये है कि जब इंडिया और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की मूवमेंट चल रही थी तो जो कांग्रेस थी उसके पास ज़्यादा कदावर लीडरशिप थी। हमारे पास एक दो के अलावा उस बराबर की कदावर लीडरशिप नहीं थी अनफॉर्चुनेटली। हमारे पास कायदे आज़म थे, लियाकत अली खान थे और एक दो और आप लीडरशिप कह सकते। इस पर बहुत क्रिटिसिज्म आ सकता है मुझ पे पाकिस्तान से, आई एग्री, लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो जब पाकिस्तान बना, अगर तो कायदे आज़म जिंदा रहते तो वो एक ऐसी शख्सियत थी कि उनके सामने गैरिजन स्टेट ना बनती। वो क्योंकि अल्लाह को बहुत जल्दी प्यारे हो गए, लियाकत अली खान साहब को हमने छोड़ा नहीं। उनके जाने के बाद कोई ऐसी कदावर शख्सियत नहीं थी जो हैंडल कर पाती। अच्छा, अब आप अगली बात सोचेंगे कि हैंडल किसको करना था। हम क्योंकि मुसलमान थे और उससे पहले बहुत देर मुगल एम्पायर रही थी, तो यूपी, सीपी और दिल्ली के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वो तमाम दरबार के साथ रिलेटेड थे। और 200 सालों में कौमों का डीएनए चेंज नहीं होता, 150 साल में, और वो भी पीरियोडिक तरीकों से। कोई साल, 125 साल ही प्रॉपर तरीके से अंग्रेज रहा है, उससे पहले तो मुगल ही किसी ना किसी तरीके से थे। तो इतने शॉर्ट टाइम में डीएनए चेंज नहीं होता। तो जो लोगों के हाथ में पाकिस्तान की चाबी आई है, शाफिया थी, पढ़ी लिखी थी, मेन, जैसे अब आप अलबामा में बैठे हैं तो यहाँ के हालात और न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी के आपको पता फर्क है। तो दरबार के करीब के जो शहर थे, वहाँ के जो लोग थे, ब्यूरोक्रेसी भी उसी में से निकली, फौज की भी ऊपर लीडरशिप उन्हीं में से निकली, अदलिया भी उन्हीं में से निकली। उन तमाम का वही दरबारी जहन था, वो अपने आप को बेहतर समझते थे। जो बाद में लीडरशिप आई वो उनके मरहूने मिन्नत थी। दूसरी तरफ बड़े फनियर किस्म के लीडर थे उनके पास, कांग्रेस के पास। बड़ा लंबा अरसा नेहरू खेल गए, वो सेंचुरी करके गए क्रिकेट में जैसे करके जाते हैं, और वो इतना लंबा खेल गए। उसके बाद उनकी बेटी आ गई, वो उनसे भी तगड़ी थी। और वो आप देखिए वो 85 तक तो वो रह गए, 86 तक तो वो लोग, तो वो इतना कल्चर सेट कर गए कि वहां गैरिजन स्टेट बन नहीं सकी। और क्योंकि आर्मी के अंदर ज्यादा सिख और मुसलमान थे, और वो एक अलग डिबेट है, उस पर अलग कभी जाएंगे, वो भी वजूहात थी बहुत सारा। पंजाब सेंट्रिक था काम बहुत ज्यादा। तो इसलिए पाकिस्तान की बदकिस्मती ये थी कि लीडरशिप नहीं थी शुरू से जो बराबर आ सके। और जो लीडरशिप थोड़ी सी आई, फॉर एग्जाम्पल भुट्टो साहब को तो गमले में लाया गया पहले माजरत के साथ, लेकिन बाद में उनके साथ शदीद ज्यादती की गई। उनका हमें बड़ा एहसास है और बड़ा एहतराम है। उन्हें फांसी दी गई, और वो तब दी गई जब उन्होंने अपने रोल को भूला। डैडी कहने से वो नेशन के गॉडफादर बनने की कोशिश की, तो उन्होंने सबक सिखा दिया। तो तब तक एस्टेब्लिशमेंट बहुत तगड़ी हो चुकी थी। तो अब उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी है, उसमें ओवरऑल थानेदारी का इंटरेस्ट भी है, चतराहट का इंटरेस्ट भी है, हर चीज का, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमता है। न्यूक्लियस वही है। तो पाकिस्तान और इंडिया की असल में जो फेट डिफरेंट है वो इसलिए है। अच्छा, दूसरा आपने सवाल किया कि पाकिस्तान के अंदर इनकलाब क्यों? चार मौके आए। चार नहीं आए हजूर, बहुत सारे आए। जब भुट्टो को फांसी दी गई उस दिन भी तो मौका था, उस दिन क्यों मौका नहीं था? जब फातिमा जना साहबा को गद्दार कहा गया, लालटेन एक कुतिया के गले में डाल के उसको मारा गया सड़कों पर, और कहा गया दोबारा इलेक्शन लड़ोगी सदर अयूब के खिलाफ, तब भी तो मौका था। 1971, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबसे बड़ा मौका तब था। बात यह है कि अशोका के जमाने से आपने साउथ एशिया में कभी कोई जंग लड़ी? अभी तो आप गोश्त खाना शुरू हुए हैं कोई 300-400 साल पहले। ये डॉक्टरों से पूछे ना अपना डीएनए आपके हालात क्या हैं अंदर के, तमाम के तो आप ये बैठे डॉक्टर मुझे गलत कहें, पाकिस्तानी और इंडियन को देखते वो कहते हैं आपका विटामिन डी कम है। ऐसा ही है जी, टेस्ट किए बगैर आपको बताओ, टेस्ट करते तो विटामिन डी कम निकलता है। आपके प्रॉब्लम और है, आपने कभी कोई जंग नहीं लड़ी। एक आपका बंदा निकला टोटल, रंजीत सिंह, इस रीजन से, जिसने कोई जंग लड़ी, जिसने कोई थोड़ा सा अंग्रेज को सख्त टाइम दिया,
और दूसरा, टीपू सुल्तान भी असल में, उनके फादर टीपू सुल्तान उतना नहीं दे सके, उनके फादर ने सही टाइम दिया था, लेकिन क्योंकि वो शहीद हुए तो वो ज्यादा पॉपुलर हो गए। हम बच्चों को बताते हैं उनके बारे में। उनके फादर ने बहुत देर ईस्ट इंडिया कंपनी को टफ टाइम दिया, हैदर अली। तो बुनियादी तौर पर आप जो हैं, आप, और वो भी सेंट्रल एशियन थे, हम थोड़ी थे। हम जो ज्यादा फिर रहे हैं, हम तो इधर से ही है ना। हम तो नथुराम, रंजीत सिंह, बलबीर सिंह, हम तो आगे, वो हमारे इंसेस्टर हैं। चीमा साहब बैठे हंस रहे हैं, हम ये तो किसी, इनके तो इंसेस्टर जो है वो सिख है ना। तो बात ये है कहने की कि पाकिस्तान के अंदर आप कहते हैं उधर आ गया, वो टैंक के आगे लेट गए। मैं शॉर्ट बात, आखिरी बात, कि आपको फिर इमरान खान को तुर्की भेजना पड़ेगा, क्योंकि इधर इनकलाब वाली हमारी कौम की जो है ना, वो हम जरा मजा शजा बाहर से लेना चाहते हैं और खुद नहीं करना चाहते। मैं क्वेश्चन लेता हूं मैं आपका। डॉक्टर साहब, एज आई सेड कि डॉक्टर साहब एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। मैं आपको बताता हूं कि असल डिफरेंस क्या है। असल डिफरेंस ये है, ठीक है, मैं आपको इसका टेक्निकल आंसर बता दूं। देखें, ये रेशियल और एथनिक फैक्टर्स नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है कि पंजाबी इंटेलिजेंसिया के अंदर एक हिम्मत पाई जाती है कि वो पंजाब को, अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं। लेकिन while self-flagellating and self-condemning, there are certain factors which are far more important, और ये ethnic और DNA वाला इसके factors नहीं है, इसके factors कुछ और। So मैं अभी आपको यहाँ पर specific 2016 का जो टर्की का failed coup है versus why पाकिस्तान में लोग नहीं निकलते, जितना पाकिस्तान में टेररिज्म, इंडिया में भी कोई नहीं निकलेगा। टर्की में फ़र्क ये है कि जिस पार्टी ने फाइट किया टर्किश मिलिट्री को सड़क के ऊपर, वो मोर लेस वही आइडिया है इस्लामिस्ट का। टर्की में जो बेसिक डिवीजन है वो इस्लामिस्ट वर्सेस द सेक्युलर्स, एंड टर्किश मिलिट्री आइडेंटिफाइड विद द सेक्युलर्स, जुडिशरी आइडेंटिफाइड विद द सेक्युलर्स, मीडिया आइडेंटिफाइड। ये सब केमालिस्ट स्टेट है। जो एंटी केमालिस्ट स्टेट है वो पिछले 70-75 साल से ग्रो कर रही थी। 1948 के बाद when Turkey became a multi-party government, in every election the Kemalists were essentially challenged by the Islamists, and again the Turkish military ने अपना foot put down किया और Islamists को इक़्तिदार से बाहर निकाला। Turkish Prime Minister Adnan Menderes was hanged in 1960s, just like Zulfikar Ali Bhutto was hanged in 1979. So by the time 2016 हुआ, Islamists को पता था कि ये होगा। They were fully prepared to take on the Turkish military. In another 10 years' time, the Punjabis will be fully prepared to take on the Pakistani military. The silver bullet has hit them. They don't realize this. उनको अंदाजा नहीं है कि उनका आगे 10-15 साल में क्या होने वाला है। पहली बात। ठहरे, exact। उनका क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट है, क्यों नहीं होता? बिकॉज लोग अपने आप को कौम का गाली निकालते रहते हैं। जब 2016 में कू हुआ, the Russians had informed the Erdogan कि ये होने वाला है, because the coup was actually being managed from the American base in Circlek में जो base था उनका वहाँ से। The Russian intelligence had warned the Turkish leadership कि ये होगा। The Turkish leadership was fully prepared. उन्होंने उस दिन एक दुआ रखवाई। There were 400,000 mosques, 4 लाख मस्जिद थी सिर्फ इस्तांबुल। वहाँ लोगों को कहा कि दुआ करने के लिए आ जाएं। लोग वहाँ मौजूद थे। Plus the Turkish Ministry of Interior had its own paramilitary troops, MIT कहते हैं उसको, जिन्होंने सड़कों पे मारा है। वो निहत्ते लोग नहीं है, वो टर्किश पुलिस है और टर्किश पैरामिलिट्री है, which was not in the control of the Turkish military. ये फैक्शनल कू था। टर्किश मिलिट्री ने भी तो गन्स ही उठाई हुई थी, तो दूसरी तरफ भी लोगों ने गन्स उठाई हुई थी। वो फुली प्रिपेयर्ड थे। ये पूरा जो पाकिस्तानी नैरेटिव है ना, पाकिस्तान की उर्दू मीडिया का, ये बड़ा सुपरफिशियल नैरेटिव है पाकिस्तानी स्टेट का, कि लोग निकल आए, लोगों ने चैलेंज कर लिया, लोग बहादुर हैं, हम बहादुर नहीं हैं, हम बेगैरत हैं। ये सब इसे कहते हैं ऐसे ही सतही स्ट्रीट टॉक है। सो देयर आर फंडामेंटल डिफरेंसेस इन द पावर स्ट्रक्चर इन टर्की, एंड फंडामेंटल डिफरेंस पाकिस्तानी मिलिट्री की बड़ी डीप पेनिट्रेशन है। वो पुलिस को भी कंट्रोल करते हैं, वो रेंजर्स को भी कंट्रोल करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को भी कंट्रोल करते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को भी कंट्रोल करते हैं, वो मीडिया को भी कंट्रोल करते हैं। टर्किश मिलिट्री नेवर हैड दैट काइंड ऑफ पेनिट्रेशन इनटू टर्किश सोसाइटी। सो ये एक और किस्म का कॉन्फ्लिक्ट है, वो एक और किस्म का। इसमें एक डायमेंशन मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि हम तो इसी हिस्ट्री में, इसी तारीख को जी रहे हैं ना। देखिए 2017 में आपको याद है जब ये अक्टूबर है 2017, तो खान साहब के बनी गाला के नीचे सारा जो था वो नाकाबंदी हो गई थी।
आपने देखा होगा मैं अफवाह भी मतलब मुझे अबडक्ट करके ले गए थे जब मैं सिर्फ मिलने जा रहा था उनको, भाग आया पुलिस वैन से और खान साहब को गुस्सा था क्योंकि देखिए जब आप इनोसेंट हो ना और आपको कोई अरेस्ट कर ले या आपसे बदतमीजी करे तो गुस्सा चढ़ता है इंसान को, ठीक है, और गुस्से से आप फिर वायलेंस की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है ना। ये हम सारों ने शहबाज गिल के साथ भी ऐसा हुआ, आई एम श्योर इनको भी बहुत गुस्सा आया होगा और मान से मान है मतलब सबसे मान है जी। तो कह ही रहा हूं मैं, लीडरशिप का फर्क So it's decent, right? I mean, I haven't हाँ जी, मैं बात ये बताना चाह रहा हूँ कि एक तो उन्होंने कहा कि हमारी फितरत में नहीं है, हमारी डीएनए में नहीं है, इन्होंने वो बताया फर्क जो तुर्की का है, लेकिन लीडरशिप का बहुत बड़ा फर्क है। मुझे जब गुस्सा आया और मैं वाकई अब कॉन्टेम्पलेट कर रहा था वायलेंस, तो खान साहब ने कहा देखो 27 साल से मैंने ये तहरीक इंसाफ जो है ना, मैं लोगों ने कहा मिलिटेंट विंग रखे, हमने कोई मिलिटेंट विंग नहीं रखा अपने पास। कह रहे मेरी जो जिद्दोजहद है वो पुरअमन आइन के और कानून के दायरे में रह के सब हमने जिद्दोजहद करनी है। उन्होंने कायदे आज़म का भी एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने 40 साल अपनी तहरीक की, उसके अंदर कोई वायलेंस उन्होंने नहीं कहा था कि वायलेंस करो। तो अभी भी खान साहब ने पिछले जो 16 महीने हैं उसके अंदर हम हिसाब लगाए कि लोगों को किस तरह मोबिलाइज किया है कि जलसों पे जाएं, वोट करें, खवातीन बाहर आए। लेकिन अब गुंडे जो हैं उन्होंने रियलाइज कर लिया कि इनके पास बंदूकें तो है नहीं, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो इनको मारो, इनको जेलों में बंद करो। गुस्सा बहुत ज्यादा है। मेरी जो बहन के साथ हुआ, जो मेरे बहनों के साथ हुआ, मुझे भी जाके बदला लेने को दिल चाहता है, लेकिन मैं क्यों नहीं, क्योंकि मेरे लीडर जो है वो कहता है नहीं, हमारा रास्ता जो होगा पूरा मन होगा, वो आइन के अंदर होगा। जी जी please identify yourself. So, my name is Amir Hussain and I'm also from Atlanta. Okay. And I'm not a doctor. ठीक, Amir Hussain from Atlanta. So I'm basically diversity. Anyway, so मेरा ये क्वेश्चन है कि right now Imran Khan is in jail. आपका क्वेश्चन किससे? आप आइडेंटिफाई करें, किससे पूछना चाहते हैं? Anybody can answer. Anyone. Okay, go ahead. So Imran Khan is in jail, ठीक है? और हमारे हाँ ठीक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, नवाज शरीफ है, वो है शहबाज शरीफ है, जरदारी के सारे के बच्चे हैं. Imran Khan, he didn't bring anybody from his family into politics, right? This is a big tribute to him. This should go to his advantage, but in our case, it goes to his disadvantage. जब अप्रैल 2022 के अंदर जब हुकूमत गिरादी थी, तो shouldn't he gone towards elections within his party, ताकि जो पार्टी है वो ज़्यादा strong footing के ऊपर हो, and whether he's there or he's not there should not matter. This party would have been much stronger. जी, Amir, ये क्वेश्चन ना गिल शहबाज would be the best person to answer this because पार्टी की डायनामिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये. जी प्लीज, आप पूछना चाह रहे थे ना, यहाँ पे एक साथ थे आप. जी जी. Your name is Zia. Everybody here today wants to know. We know the problems. We've heard that multiple times. What can an overseas Pakistani do? Is there a forum? Is there? Yeah, my question basically. Everybody here has the same question. Yeah. What can overseas Pakistanis do to help? Is there a forum? It's a very good question. That we can use. I'm still waiting for my answer. It's a good question. अच्छा, आप इसका comment करते हैं फिर गिल बोलेंगे the political dynamics. I must have heard this question. I'm honestly not exaggerating 1,000 times, and maybe more. And when you offer a opportunity and you look behind, तो शहबाज गिल जैसा बंदा कहता है कोई के पीछे मेरे है कि नहीं? There's nobody. It's really interesting to hear this question repeated over and over again. What can we do? What can we do? And he said, well, you can do this, and then there's nobody. He said, you can do this, and then there's nobody. You have So, that list.
So what I'm actually placing it on record here. I must have said this maybe 100 times in my vlogs. I mean, this is what you can do. This is what you can do. And I send my emails, other people's emails. You know, contact this guy. Less than 0.1% people come up and put their ideas where their mouth is, or their time, or their expertise. And it's really sad. And I'm not trying to run you down, honestly. I think there are very serious-minded people sitting here who genuinely want to help and say, give me a cogent platform or a thought or an idea where I can put my effort. Yeah, that's what you're looking for, right? And I'm going to leave that with people like Shahbaz and Moeed, because these guys are the leaders to put this across to you. जी, पॉलिटिकली आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे देता हूँ. देखिए, बात ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है किसी भी मुल्क की, आप यहाँ रिपब्लिकन देख लें, डेमोक्रेट देख लें, वो उसी कौम की एहसास होती है, उसी कौम के अंदर से वो पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज करती है. आप कहीं बाहर से लोगों को नहीं ला सकते. खान साहब ने 26-27 साल लगा के एक पार्टी बनाई. बहुत सारे लोगों पे वो बहुत ट्रस्ट करते थे, उन्हें लगता था वो 26 साल से उनके साथ हैं. बहुत सारे लोगों ने, वो जेल भी नहीं गए, अपने घरों में बैठे हुए ही उनको बस टेक्स्ट मैसेज आया कि अब आप पार्टी छोड़ दीजिए, और उन्होंने आगे कहा कि हम पे बड़ा प्रेशर था, ये मंजन बेचा, हमें धमकी दी गई. कुछ नहीं उनके साथ हुआ. जो आपके सामने महमूद रशीद के उम्र में, यास्मीन राशिद के उम्र में उनके बच्चे हैं. महमूद रशीद का दामाद जो है वो मिलिट्री कोर्ट में ट्राई हो रहा है. बेटी उनकी इस मुल्क में अपने छोटे बच्चों के साथ आई हुई, जिनका शौहर ट्राई हो रहा है. मैंने ऐसा नहीं है कि और लोगों की फैमिलीज को मुसीबतें नहीं हैं, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें, लेकिन वो रुके हुए हैं क्योंकि आइडियलिस्ट हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं. लेकिन खान साहब के बहुत करीबी लोग जो हैं वो अभी उन्होंने मई के बाद डिच किया, और खान साहब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि 26 साल से 25 साल से ये लोग साथ हैं. मैंने इन्हें शख्स से शख्सियत बनाया, इन्हें पहचान दी, कौम ने इन्हें एहतराम दिया, इज्जत दी, तो ये लोग नहीं जाएंगे. खान साहब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखते. उनका ख्याल यही था कि यही वो लोग हैं जिन्हें मैं अपने बच्चों की तरह, छोटे भाइयों की तरह प्रमोट कर रहा हूँ, खड़ा कर रहा हूँ, तो ये मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े होंगे, पार्टी के साथ खड़े होंगे, आइडिया पे खड़े होंगे. अनफॉर्चुनेटली वो मनहसल कौम, मोईद का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल ठीक, वो टेक्निकली ही इज एनालाइजिंग करेक्ट के टर्की का और हमारा मामला डिफरेंट है. लेकिन मुझे हिस्ट्री और भी पढ़नी है, मुझे देखना है टर्की ने पिछले 200 साल में, 300 साल में अतातुर्क के अलावा टर्की ने क्या कुछ किया है. टर्की की 800 साल की तारीख क्या है. मैं अशोका से लेके अभी तक तारीख देख रहा हूँ ना कि हमारी तारीख क्या है. तो मुझे तो कहीं कोई मूवमेंट, छोड़ दीजिए इस बात को कि मिलिट्री के सामने आप खड़े हुए हैं कि नहीं, आप किसके सामने खड़े हुए. महमूद गजनवी वाज एन इन्वेडर ना एट दैट टाइम. जो हमारे तो वो, क्योंकि हम मजहबी तौर पर उन्हें हीरो समझते, हमारा मजहब वो है, लेकिन वो उस टाइम तो इन्वेडर ही थे ना, तो कौन खड़ा हुआ था. तो हमारे खित्ते में खड़े होने का रवाज है नहीं, लेटने का रवाज है. वो अब आपको ये बुरी लगे बात, अच्छी लगे, वो एक अलग बात है. हर जगह आप देख लें, मैंने इतना ही कहा था मोईद के गैर कानूनी, गैर आईनी अहकामात मत माने. आपके अलावा किसने मुझे सपोर्ट की थी जब मैं पकड़ा गया था पाकिस्तान के मीडिया में? 1% भी गलत बात नहीं की. अनीता तुराब के केस में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है, असगर खान साहब की पिटीशन में ये कह चुकी है. अकेला मोईद था मेन स्ट्रीम जर्नलिस्टों में, या 1-2 और लोग थे. वो भी 1-2 लोग भी मेरे पे टॉर्चर को कंडेम कर रहे थे. रीमा उमर, आई मस्ट गिव हर क्रेडिट, मैं उनका बड़ा क्रिटिक हूँ, जियो पे होती हैं. शी सपोर्टेड मी इंटेलेक्चुअली कि इसने कोई गलत बात नहीं की. लेकिन बाकी सारे, इवन मेरी अपनी पार्टी के लोग सारे बैंड वैगन को जुल्म के, लेकिन इंटेलेक्चुअली नहीं वो इसको समझ पा रहे थे कि गलत क्या और सही क्या है. तो प्रॉब्लम ये है कि हम मिनासल कौम जो है, जो मैंने पहले कहा कि हम वीक हैं, इससे सख्त वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं करता, हम वीक है, आसानी की तरफ जाना चाहते हैं. तो जो पार्टी में है वो मैंने आपको जवाब दे दिया. आपका मैं क्विकली लास्ट वर्ड कह दूं कि क्यों इधर कॉन्फ्लिक्ट है, कि हम क्या करें, हम क्या करें. देखिए, पहले तो अपना माइंड क्लियर कर लें. अब यहां से बैठ के पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकते. आपने एक ऐसी लाइफ को साइन अप किया है जो बहुत बिजी है. अमेरिका में जब आप साइन अप करते हैं लाइफ को,
तो आपकी लाइफ बहुत बिजी हो जाती है। I'm sorry पाकिस्तान to की तरह say, हाउस सपोर्ट Bill, नहीं है, I'm sorry घर to भी say, खुद साफ we've been करना है, doing it. सारे काम आपने खुद करने हैं। We've been doing it. We So sent email to मेरे our university. जी मैं कोई और बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इधर आप पाकिस्तान में आप किसी जलसे पे लोगों को बुलाते हैं ना, तो लोग 8 घंटे 6 घंटे पहले भी आ सकते हैं, घर में कोई और मामले को देख रहा है। ये नहीं कि वहाँ बिल्कुल वो फारिग हैं, लेकिन कोई ना कोई सपोर्ट है। खातून अपने बच्चे माँ के पास छोड़ के आ सकती है। यहाँ आपके ऊपर बड़ा वजन है अपनी जिंदगी का, और आप वो अपनी 2 टांगों पे उठाए फिर रहे हैं पहले, तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, परेशान होते हैं पाकिस्तान के हालात देख के, आपका दिल परेशान होता है और आपका कुछ करने को दिल करता है, और फिर आप हेल्पलेस फील करते हैं। तो बुनियादी तौर पर आप ओवर कमिट करने की कोशिश करते हैं जो आप कर नहीं सकेंगे, जो असल में वो कह रहे हैं कि बाद में नजर नहीं आते लोग। अब एक डॉक्टर है जो 36 घंटे की शिफ्ट कर रहा है, आप मुझे बताइए उसे मैं कहूँ कि चले आए व्हाइट हाउस के सामने भूख हड़ताल करनी है, काम साइन आप मेरे साथ वहां बैठे हैं, आप वो आएगा नहीं आ सकता, फिर से नौकरी खत्म हो जाएगी। आपका रोल और है, आप अपने रोल में खेलें। आपका रोल है इस तरह के सेमिनार्स करें जगह जगह पर, वहां से आपको सोशल मीडिया के बाइट्स निकलेंगे, लोगों को अवेयरनेस आएगी। आपका काम है अपने यहाँ गैदरिंग करें, अपना रिप्रेजेंटेटिव उसको मिले, अपने कम्युनिटी ग्रुप्स बनाएं। इंतजार मत करें कि आपको शहबाज गिल, मोईद पीरज़ादा, फलां बंदा कुछ बताएगा। आप अपने शहर में 5 लोगों, ये आपके पास है ना, इनको कहें यहाँ के कांग्रेसमैन, उनके साथ आप बात करें। आप किसी टीवी चैनल के किसी एंकर को अप्रोच करें अपने शहर में जो है, किसी जर्नलिस्ट को करें, जो खाने पे बुलाएं, उसको बताएं ये हो रहा है, उससे आर्टिकल लिखवाएं। तो छोटी छोटी अपनी सतह के ऊपर, अपनी मस्जिद, अपने मोहल्ले के लेवल के ऊपर आप जो कर सकते हैं वो करें। आप वो जो समझते हैं कि आप यहाँ से बैठ के पाकिस्तान में कोई मूवमेंट लीड करेंगे, आप वो नहीं कर सकते। पैसों के चक्कर में मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं तो वो खान साहब जैसा बंदा तो कर सकता है क्योंकि वो बड़ा ईमानदार है। मेरे साथ अगर 2 बंदे और ऐसे मिल गए जिन्होंने जेब में डाल दिया तो साथ मेरी रेपुटेशन भी लुढ़क जाएगी। तो मैं बातें कर सकता हूँ, पैसे इकट्ठे करने का मैं कह नहीं सकता आपको। तो ये मेरा जवाब है। So I just want to add a very specific idea to this, because that's an important point Shahbaz brought up. So I interviewed Noam Chomsky twice, and every time I asked him this question, I said, Professor Chomsky, how do you mobilize people? And he said, when the first time I was invited to speak against the Vietnam intervention, and he was much younger, he said there were only 3 people in that house: the husband, the wife, and the gardener. And this is Noam Chomsky himself. And he said this is hard work. So if each one of you sitting here can engage with 5, 10, 15, 20 Native Americans. When I say Native Americans, I don't mean native. I mean people who've come on the Mayflower, for example, or who've been here for several hundred years. And you tell them your story, and you tell them what's happening in Pakistan. And you tell them, and you've got lots of information from all these people who speak every day, right? And you want to throw in a few 4-letter words, watch my vlogs, and you can share those with them. But seriously, you've got to educate the communities here, the white communities, the Latino communities, the African American communities of what's happening, so they build up the pressure for you. Not just you by themselves, just the Pakistani community or the Muslim community. No, you've got to engage the community that has influence in this country. And I completely endorse what he says. And if you guys, each one of you sets a target, I will talk to 10 people. Go knock on your neighborhood's door and ask them, do they know who Imran Khan is? I guarantee you 90% won't, if they're not Pakistan. I think that's something you can really do. Thank you. सर मुझे कहा जा रहा है कि वाइंड अप करें, एक तो मुझे कहा रहा है वाइंड अप करें, जो बार बार कहा जा रहा है। my name is Pirzada. I am a Pakistani national visiting USA. अच्छा देखिए मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन हूँ सर। USA, I am a Pakistani national. My name is Mirza. I am 70 years old, Pakistani national visiting USA. I want your opinion that during my lifetime, during Afghan war, I have observed that a fanatic military dictator
General, he had created a monster for personal gain, for monetary gain, and this monster is still destroying Pakistan. ठीक है I'm referring to the TTP or whatever. ठीक है How can we get rid of this monster? ठीक अच्छा तो 1 मिनट बस मेरे पास ये देखिए शहबाज गिल की ओपिनियन है पावरफुल ओपिनियन है मोईद का मेरा कॉन्ट्रेरियन है और मेरी जिंदगी का निचोड़ ये है कि देखिए वो एक मार्गरेट मीड की एक सेइंग है एक वो सोशल साइंटिस्ट थी मार्गरेट मीड उसने ये कहा कि never think that a few people cannot change the world because the history of the world is always changed by a minority, right? अच्छा अब मैं आपको ये जवाब दोहराने लगा हूँ पहले से सवाल था 17 सितंबर को व्हाइट हाउस के आगे हम सब जो है प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं कि इमरान खान को रिहा करो और जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स इनको रिहा करो और फ्री और फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान में कराओ तो अगर आप में है बहुत मुश्किल है मुझे पता है कि अलाबामा से वाशिंगटन डीसी जाना लेकिन प्रैक्टिकल ना हो लेकिन आपके और रिश्तेदार तो होंगे ना वाशिंगटन डीसी के करीब तो मैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉल टू एक्शन ये होता है कि खुद नहीं कर सकते तो किसी को कहे तू चल ठीक है तो मैं जा रहा हूँ 17 सितंबर को व्हाइट हाउस के आगे आपको तराने भी सुनाएंगे और जो बाइडेन को कहेंगे कि जो बाइडेन खो जा अच्छा और 30 अगस्त को स्टेट डिपार्टमेंट के सेमिनार आप बम्बार्ड करें सवाल उनको अच्छा देखिए मुझ पे बहुत प्रेशर है मुझे ऑर्गेनाइजर्स कह रहे हैं इसको वाइंड अप करें बिकॉज उन्होंने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो क्वेश्चन नहीं ले सकते कुछ क्वेश्चंस आपके बाहर होंगे मैं गैलरी में वी विल ट्राई टू आंसर सर आपको पहले जब मैंने दिया था आप नहीं मैंने आपको दिया था तो उस वक्त आपने कहा मैंने नहीं क्वेश्चन सर मैं एक सेकंड मैं मुझे बात कंप्लीट करने दें अभी आपका टेस्ट हो जाएगा पाकिस्तान की हुकूमत की बड़ी ख्वाहिश है कि 3 लोगों के उन्होंने नाम दिए हुए यहाँ अमेरिका में बड़े ताकतवर हल्कों को उसमें एक मोईद पिरज़ादा है एक शहबाज गिल है और एक शाहीन सिपाही नहीं आपका नहीं दिया 3 लोगों का नाम दिया हुआ है कि इनको चुप करवाना है इनके खिलाफ कोई केस बनवाएं हो सकता है वो बना दे कोई केस जब बनेगा तो आपका भी टेस्ट हो जाएगा कि आप में से कितने हमारे साथ खड़े होते हैं मेरे शहबाज गिल और शाहीन सिपाही के खिलाफ हमारा नाम एक आज 8 हफ्ते से दिया हुआ है हमें पता है कि दिया हुआ है और वो बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि इनको किसी तरह से चुप करवाएं यहाँ से बिकॉज ये हमें हर्ट करते हैं एक बात हो गई अभी वाइंड अप है कि देखें आपकी बहुत स्ट्रेंथ्स भी हैं आपकी बहुत लिमिटेशंस भी हैं इस सारे क्राइसिस चीज़ें निकलती भी इस पूरे क्राइसिस से 16 महीने की चीज़ निकली है कि पाकिस्तानी नॉर्थ अमेरिकन कम्युनिटी पहली दफ़ा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उसके अंदर आई है इससे पहले पाकिस्तान की गैरिजन स्टेट ने अपने मुख्तलिफ छोटे मोटे मकासद की खातर कभी कश्मीर में को मुजाहरा करवा दिया कभी हमें F-16 के पार्ट्स चाहिए कभी मोदी के खिलाफ मुजाहरा करवा दिया इस चीज़ में पाकिस्तानी अमेरिकन के मिलियंस ऑफ डॉलर ज़ाया भी करवाएं और उनकी सेनेटर से मीटिंग करवा के काउंसल जनरल एम्बेसडर ने खत लिख दिया वाशिंगटन में इस्लामाबाद में कि मैंने करवाया था और अपनी ACR अपनी प्रमोशन के लिए जो है वो ठीक करवा ली तो ये जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है हम अभी खड़े हैं स्टार्ट हो रहा है सितंबर 2023 इलेक्शन ईयर शुरू हो गया है इलेक्शन सिर्फ प्रेसिडेंट का नहीं होना नवंबर की 4 तारीख को इसमें 30 सेनेटर्स का भी 30 या 33 सेनेटर्स ने भी री इलेक्शन फेस करना है इसी तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी री इलेक्शन फेस करना है अब ये आपकी अपॉर्चुनिटी है हर शहर के अंदर एक पाकिस्तानी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है आप यहाँ पर हैं बर्मिंघम में है इसी तरह डैलस में भी कम्युनिटी है ह्यूस्टन में भी कम्युनिटी है टेम्पा में भी कम्युनिटी है बॉस्टन में भी है डिट्रॉइट में भी है मिनेपोलिस में भी है मैरीलैंड के हर शहर के अंदर है एटलांटा में भी है सर 100+ शहरों में कम्युनिटी है चैलेंज ये होगा और पाकिस्तान का जो क्राइसिस है वो कहीं खत्म होने वाला नहीं है आप ये ना सोचें कि आप आज एक नारा मारेंगे तो खत्म हो जाएगा वो एक लंबा कैंसर है उसने अभी बड़े महीने और चलना है अमेरिका की पॉलिटिक्स में अगर आप लोग पैदा हो जाएं अगले 1 साल में और इस सेनेट के इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इलेक्शन में उन्हें महसूस हो कि अगर आप उनके खिलाफ हैं किसी साइड के कैंडिडेट्स को या किसी की साइड पे हैं तो इट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इट्स गोइंग टू नॉट मेक अ डिफरेंस अगर आप अपनी रवायती पॉलिटिक्स करेंगे यू हैव टू अलाइन विद अदर मुस्लिम पॉलिटिक्स विद इन यूनाइटेड स्टेट्स
मस्जिद आपकी स्ट्रेंथ है, वहाँ से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बांग्लादेशी भी हो सकती है, हिंदुस्तानी मुस्लिम भी हो सकती है, पैलेस्टीनियन भी हो सकती है। सिमिलरली आपको कोशिश करनी चाहिए, मुश्किल काम है, इंडियन जो कम्युनिटी है उससे अपनी हॉस्टिलिटी रिड्यूस करें। वो एक खौम खा की मुफ्त की बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी है, उस हॉस्टिलिटी को रिड्यूस करें, मुस्लिम ग्रुप्स के साथ अलायंस बिल्डअप करें, अपनी प्रेजेंस शो करें, अपने आप को एम्बेसी से दूर करें, पाकिस्तान एम्बेसी और काउंसलेट की फरमाइशें पूरी करना बंद कर दें। वो आपको एक गलत रास्ते के ऊपर लेके जा रहे हैं 75 साल से, वो सिर्फ अफसरों की कहानी है। तो इसमें से बड़ा कुछ निकल सकता है। ये पाकिस्तान की स्ट्रगल अगले चंद हफ्तों में ठीक होने वाली नहीं है, ये स्ट्रगल अभी लंबी चलेगी। जो वो करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप अपने आप को अमेरिकन पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाएंगे। 2-3 चीज़ें और कर दूँ, मैं जब से यहाँ आया हूँ 9 महीने से, मैं पूरे अमेरिका में बहुत सी जगहों में गया हूँ। जहाँ मैं गया हूँ पाकिस्तानियों के घर में वो सिर्फ पाकिस्तानियों ही को जानते हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। वो हिस्पैनिक्स को नहीं जानते, वो ब्लैक अमेरिकन को नहीं जानते, वाइट अमेरिकन को नहीं जानते, बहुत कम है वहाँ, उनकी कोई कनेक्शन नहीं, ये एक प्रॉब्लम है। उनके घरों में आना जाना भी किसी का नहीं है। ईद है तो आपस में करते हैं, उनको नहीं बुलाते, क्रिसमस का पार्टिसिपेट नहीं बनते, और भी जो बहुत से उनके हैं। तो आप अगर अपने आप को इंटेग्रेट नहीं करेंगे तो आपकी पॉलिटिकल वॉइस नहीं होगी। तो आपको अपने आप को इंटेग्रेट भी करना है अमेरिकन सोसाइटी के अंदर, जिसके अंदर आप आ गए हैं, उसने आपको बहुत दिया है, और ये सारी उसकी कहानी है। बाकी जो शहबाज साहब मेरी क्रिट लगा रहे थे अलामा इकबाल पे, वो मैं शेर आपको बता देता हूँ, उस पर आप लोग में से किसी ने भी बताना है तो मुझे बाद में बता दे कि अलामा इकबाल ने एक शेर लिखा कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी, शाखे नाजुक पे जो आशियाना बनेगा वो नापायदार होगा। 100 साल गुजर गए, 1907 में लिखा था, 120 साल गुजर गए। जिस तहजीब की उन्होंने डेथ की बात की थी, उस तहजीब के पैसे मांग के हमारी तहजीब अपना खर्चा चला रही है। इसका मतलब है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कल्चर की, सिविलाइजेशन और तहजीब की, वो शायर मशरक की अंडरस्टैंडिंग में कमी थी डेफिनेटली तौर पे। जिस तहजीब का तो वो लिख चुके थे ऑब्ituary उन्होंने लिखी हुई उस तहजीब की, वो तहजीब तो स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ पे मूव कर रही है, और जिस तहजीब का उनका ख्याल था कि छाने वाली है, वो तहजीब कहीं नहीं गई है। दिस इज व्हाट आई मेंट। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। अच्छा जी, एक डिस्क्लेमर मुझे देना होता है हर जगह लीगली कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ, ये रिक्वायरमेंट है मेरे पे अंडर लॉ, मैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ पीटीआई के और इमरान खान के एजेंट के तौर पर, फॉरेन एजेंट के तौर पर रजिस्टर्ड हूँ अमेरिका में, और मुझे ये आपको बताना है ताकि ये रिकॉर्ड पर रहे। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। और आखिरी बात जो मोईद ने की, मोईद बिल्कुल ठीक कहता है आज के पर्सपेक्टिव में देखें, लेकिन जब इकबाल लिख रहा था, क्योंकि वो तो उस जमाने का जवाबदेह है ना, इकबाल जब वो लिख रहा था, तो जब वो लिख रहा था तो उस टाइम वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 तिक्का बोटी कर रहा था पूरा यूरोप एक दूसरे की, और बिल्कुल तहस नहस किया हुआ था, और सबको लग रहा था, सिर्फ इकबाल को नहीं लग रहा था, सब बड़े स्कॉलर फिलोसफर्स को लग रहा था कि दिस एंड ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ दोज पीपल, तबाही कर रहे हैं। और उन्होंने 1940-45 के बाद अकल कर ली, 45 के बाद, और वो ठीक हो गए। वजह ये है हम अभी भी नहीं अकल कर रहे। 1907 में शेर लिखा था, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हो रही थी, मोहब्बत की कहानी थी जब लड़कियों से। Can I really request that all the panelists to please sit down? लेकिन एक सेकंड लेकिन जी जाने से पहले, I don't know whether the show is not over. एक मिनट बैठे रहे, We have some very important things. Please, everybody sit down. ये आप लोगों को, I have just 5-10 minutes after this, and it's very important. It's the best part of the show. अच्छा नहीं, हमारे ना जहाँ से भी आप हैं, पाकिस्तान से हैं, हिंदुस्तान से, ये आपको पता होगा। Please sit down, please. मेरे साथ मिलके, लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालड़ हो, लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालड़, सिंदड़ी दा सेवण दा सफी शहबाज कलंदर, तुम मस्त कलंदर, सफी शहबाज कलंदर, तुम मस्त कलंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, चार चराग तेरे बलन हमेशा, तुम तेरे चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा बालन आयो बला झूले लालण, हो लाल मेरी। पाकिस्तान इमरान खान, जज्बा जुनून तो हिम्मत हा, जस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी
पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो, पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान इमरान खान। We have one, there's two things that I want to do. We're going to conclude the session right now. We have one special presentation made by Banwar Bhai Yunus Banwar. It's made specially from Pakistan for this event. Please watch it, please. You'll enjoy it. It's 3 minutes, and I think you'll all love it. Please. Can you make it expanded? Pakistan's former Prime Minister Imran Khan was wounded today when a man opened fire on a convoy of vehicles in eastern Pakistan. मैं ये जदोजहद कर रहा हूँ, ये अपनी जात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। What I always hoped one day would be my people politically aware, understanding what true freedom is. The demand in Pakistan is for real freedom, which means justice, which means fundamental rights. In my 26 years of politics, it's the first time I feel that people realize that they want true freedom. Failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. Pakistan! Pakistan ke matlab kya? La ilaha illallah.